मोहित आनंद और मैं किया शुक्ला। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। From schools to startups, igniting young minds to innovate. It is the theme for National Technology Day 2024. Students, I am certain that you all are wondering and probably curious about what future holds in store, right? So today, we will try to give wings to your dreams. It will be definitely a special event and an important moment for all of you, especially students who we believe as architects of tomorrow's India. May I now request our chief guest, Dr. Arvind C. Ranade, our guest of honor, Dr. Tapan Mishra, our co-host, Dr. Narottam Sahu, Director SAC, Shri Nilesh Desai, and NDT Committee Chairperson, Dr. Jollyधर, to kindly join us on the dais. Thank you all. हमारे प्यार और स्नेह को दर्शाते हुए हम सभी गणमान्य व्यक्तियों का छोटे पौधों से स्वागत करेंगे। मैं श्रीमती माधवी को निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर अरविंद रनाडे का स्वागत करें। I request Ms. Pooja Darji to welcome Tapan Mishra sir. I request Ms. Shweta to welcome Shri Narottam Sahu. I request Ms. Dheera to welcome Nilesh Desai sir. I request Ms. Urvi to welcome Dr. Jollyधर. धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रार्थना से करना चाहूंगी। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। I fold my hands before the light that brings prosperity, auspiciousness, good health, abundance of wealth, and destruction of enemies' intellect. मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए।
आप सभी का धन्यवाद। Today's date is announced as National Technology Day by our former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. It is celebrated to commemorate the historic nuclear test carried out on May 11, 1998 in Pokhran, Rajasthan. The successful testing of the nuclear bomb, codenamed Shakti, made India the sixth country in the world to possess nuclear technology. Today, we have gathered here to honor the remarkable achievements and indomitable spirit of scientists across the country. Let us reflect on the technological progress we made, recognize the challenges that remain, and reaffirm our commitment to fostering a nation where every youth has the opportunity to thrive and shine. So let's have a video on the theme of NTD 2024. आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। Under Innovation Vision में 10,000 Atal Tinkering Labs, Atal Incubation Center, Atal Community Innovation Center और Inspire Scholarship के जरिए स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। आज भारत सरकार के 11 मंत्रालयों और विभाग मिलकर स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ आप मिलेंगे मजबूत टेक्नोप्रेन्योर्स और उनके एप्लीकेश नवाचारों से साक्षी बनेंगे देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के और करीब से समझेंगे भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को उनके विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पाद में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजादी के अमृतकाल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब नए कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे देश आने वाले अगले 25 सालों में देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करना है। सही नीतियों और कार्यक्रमों के साथ भारत विश्व में अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। आगे बढ़ते हुए अब मैं एनटीडी की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जॉलीधर से अनुरोध करूंगी कि वे सभा का स्वागत करें और इस आयोजन के बारे में हमें जानकारी दें। Very good morning, respected Dr. Arvind Ranade, Director, National Innovation Foundation, Sri Tapan Mishra, Founding Director, Shishi Radar and former Director, SAC, Sri Nilesh Desai, Director, SAC, Dr. Narottam Sao, Advisor and Member Secretary, GUJCOST,
Sri Chandubhai Virani, founding member Balaji Wafers, Sri Ajit Soni, founder MyBuy, Ms. Asta Jala, space architect, associate director, controller, SNC members, professors, distinguished delegates, and my dear students. Suswagatam and hearty welcome to all on the dais, off the dais, and online viewer. Today, we are celebrating National Technology Day to commemorate India's successful nuclear test at Pokhran, Rajasthan on today's date, that is May 11, 1998. The celebration of Technology Day symbolizes India's quest for scientific inquiry, technological creativity and innovation, and the integration of this development into national socio-economic benefits and global presence. It is untiring efforts and missionary zeal of dedicated scientists and technologists of our nation that has paved the way for India's emergence as a technology power. We are now working towards a technological revolution aimed at empowering millions of our countrymen. Today, science and technology has given new dimension and new horizon. It has made remarkable accomplishments and contribution in different areas such as defense, navigation, agricultural, healthcare, weather monitoring, communication, and space exploration. Furthermore, it serves as a source of innovation for the younger generation to pursue careers in science and technology, thus promotes a culture of research and innovation within the nation. From the invention of zero and decimal system in mathematics to the development of Ayurveda, an ancient system of medicine, India has contributed significantly to the world's technological progress. In recent times, India has made remarkable progress in various fields of science and technology, making it a hub of innovation and creativity. Today, we have gathered here in Space Application Center, which was a dream and vision of our late Sri Vikram Sarabhai, father of Indian space program. And I want to quote his vision. We must be second to none in the application of advanced technology to the real problem of man and society. Unquote. ISRO, in pursuit to fulfill the vision of Dr. Vikram Sarabhai, has been significantly contributing in space exploration and space research in the field of communication with the forecasting, navigation, remote sensing, and scientific research, thereby touching the common man. It also successfully launched the Mars Orbiter mission in 2014, making India the first country to reach Mars in its first attempt. Success of Chandrayaan 3 and Aditya L1 has ushered a new era of planetary science and exploration. Soft landing on the moon was a moment of glory for Indians for unique Make in India accomplishment. On behalf of NDT chairperson, I want to convey that 217 engineers have participated across 31 colleges from Gujarat, covering 18 cities with 60% male, 40% female, along with 4 regional science centers and 30 community science centers across Gujarat. I feel proud to welcome all the legendary stalwarts who can enrich
and motivate the future architect of our country by delivering their success story. Although sustainable growth in any critical technology rely on continuous innovation, skill development for repeatability and reproducibility. Hence, the responsibility of sustainable growth completely depends on you, the future architect of India. My dear students, you have a strength, you have a capability, and I am sure that inspiring talk will ignite the young minds to innovate for the better future so that you can rock the world and can gift indigenous Atmanirbhar Bharat to us by your creativity, innovation, and sheer brilliance. Once again, on behalf of the organizing committee, heartiest welcome to you all. I strongly believe that this program will be fruitful to you. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, ma'am. Now, from our co-host, GUJCOST, that is Gujarat Council of Science and Technology, we have with us Dr. Narottam Sahu, Advisor and Member Secretary of GUJCOST. He is a scientist and science educator working at Gujarat Science City. I am honored to invite Dr. Narottam Sahu to give an opening address. Sir, please. Good morning, everybody. Warm greetings on behalf of Space Application Center, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, and Gujarat Council on Science and Technology. It's a very auspicious day, and it's a very auspicious occasion and a beautiful theme. Schools, from schools to startup, igniting young minds to innovate, and from this August ground of this Space Application Center, ISRO Ahmedabad. So once again, I would like to congratulate all the young engineers, technocrats, those who are participating here, those who are physically present here, and all our participants and young minds, those who are attending this program through live streaming at our regional science centers at Patan, Bhavnagar, Bhuj, Rajkot, and 33 community science centers all across the state. So today's program, as our ma'am Sarah mentioned, it's a 26 years of a journey. It's a celebration of 20 success of 26 years. That is 11th May 1998, when there was that code word the entire country heard for the first time, Buddha smiles. So we don't understand what was what was the reason behind the smile and how Buddha came into the picture. But once, even 26 days, we are not that much up in real-time communication like today. So it was little time was taken that what to understand what Buddha was and how the smile came. But when we came to know the news, and it was mesmerizing entire country. It was just to stop the heartbeat that yes, we did it. The real at that real time, and that real smile gives lots of confidence and courage to millions of our young minds, young engineers, and institutions like ISRO, Department of Atomic Energy, Agricultural Research Institutions, DRDO, and so many. And rightly, the then Prime Minister, Sri Atal Bihari Vajpayee, has added another stanza to the first announced statement like Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Okay, and with that day, we also have the spirit like Jai Vigyan, Jai Anusandhan also. So today the themes is again coming back to the square, like focusing our concentration to the school childrens, the young minds, those who are the creator of the fresh ideas, those who are so unique in their thought processes, and they don't have any pollutant like people like us. We have unidirectional working in a same field or same thing or something like that way. So this day invites, encourage all young students to
to work, to share their ideas and innovation, their creativity, so that that can be groomed and groomed to a startup, which is also the next stage development, next stage revolution, you can say. The message that we have seen from this movie, that in India there are 90,000 plus startups are there. Okay, and 115 unicorns are there. In comparison to that, we are in a good position. In Gujarat, we have 10,000 plus startups are there. And last 4 years, successfully, the state is recognized as the best startup ecosystem in the country. So our department is also getting that recognitions and award, and dedicated that to the 10,000 plus startups units to the state, but not in comparison to the unicorn 115. So our number is around only 12 to 15 only. So that the region, the department and government is trying the best that how to groom our own tech startups, deep tech startup or space startups in the meaningful way, so that we can groom them. The state can give all the support, guidance, mentoring, incubation, all support, so that they can easily become that unicorn level. Unicorn level. So this type of programs gives that type of confidence and courage. We are very happy that under this theme, to groom these young minds, to groom our startup ecosystems, the Space Application Center ISRO has kind enough to organize this program for disseminations that support and encouragement to thousands of young minds, engineers, basic science students, pharmaceutical students, agricultural students, all across the state. So we are very proud of this association. We sincerely express our gratitude and thanks to Sri Nilesh Desai sir, Director Space Application Center, and entire team, Jali ma'am, and all the team, those who are so beautifully arranged this program and giving this platform to our young minds. Who knows that 217 young engineers and architects who are attending this program, this might be a turning point in your career. You can be a scientist, space scientist, helping the Nilesh Desai sir's team to that success in any mission, or you can be a nuclear scientist or a technocrats in any of that your venture. So the sky has no limit, and this is the beginning. And we are happy once again express our sincere thanks and regards to Space Application Center, Sri Nilesh Desai sir, and for this beautiful program, collaborative programs. And we like to continue this spirit and this mission. And we hope that all our students who are just going to complete their study soon become the own entrepreneurship or own creator or own innovator and contribute to the Atmanirbhar Bharat or Viksit Bharat. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words. At this moment, I would like to extend a very warm invite to Director SAC, Shri Nilesh Desai, sir, for giving an opening address. Sir, please. Thank you, Kaya. Good morning to all of you, dignitaries on the dais, Dr. Ranaji, my dear friend Tapan, Dr. Sahu, Dr. Jolly, and all our invited guests, especially Mr. Arjit Soni, Madam Astha, and Virani Sai. So at the outset, let me welcome and thank all our invitees, especially who are going to give various talks today for the benefit of our students, and also to my dear student participants. So thank you all for giving a overwhelming response to our arrangements here. We never expected that we'll get so much good response. So thanks to our organizer, Jolly Madam, and her team. I thank and congratulate them also for mobilizing this people. So let me welcome all our young student innovators as well as some of the established innovators whom we are going to listen today.
as Dr. Sahu and Jolly pointed out, that today we are celebrating Pokhran 2, 1998 nuclear blasts. Of course, nuclear bomb explosion is not a very occasion to celebrate, especially. But these are all also needed from strategic angles. So all of you are well aware of that, so I need not elaborate. And the unique thing about that event was that no other superpowers could recognize that India is going to undergo these atomic blasts. So that was the uniqueness and the innovativeness of that particular event in 1980. Otherwise, superpowers come to know about these events well in advance, and they can even stop that. So in that sense, also it was a big innovation, especially on the part of Dr. Abdul Kalam and his team, as well as our atomic energy team from Department of Atomic Energy. So in celebration of that event, and with India entering into various domains of nuclear powered NPT regime or nuclear suppliers group and all those things, it was a big occasion for India. And like we had on 23rd August when we landed on moon, now it is going to be celebrated as National Space Day. So again, we'll have a very good gathering on that day also in future. So commemorating that event of National Pokhran 2 National Technology Day is being celebrated, and this year's theme, as all of you know, from schools to startups, igniting young minds to innovate. So keeping in mind this theme, we invited, as I mentioned, some of the very renowned innovators, um, Mr. Arjit Soni, Asta Madam. We thought, and it is a diverse group of people, as you can imagine. So I again thank Jolly Madam and her team for organizing such a variety of events today. Birani Sahib, and of course, our friend Tapan Mishra ji, who is again, he is my mentor, colleague, friend, and above all, a great innovator. As we'll learn today when we hear to him. And of course, Dr. Ranade, all of you know, he's heading the National Innovation Foundation. And many of you may not be aware that NIF, which was with the grassroots innovation started by Dr. Anil Gupta ji of IIM fame. In fact, we were trying to get him also, but he's busy somewhere else, so we could not get him. But I'm happy that Dr. Anade could make it to our function. So thank you, sir, for coming here and gracing this occasion. And they are promoting various innovations in different diverse fields. Of course, we are celebrating today more on technology front, but he will tell you about what all National Innovation Foundation is doing for various grassroots innovations and how it is helping innovators. So in that sense also, as I mentioned, we have diverse set of people which will give us insight into this fascinating subject of innovation. And of course, as I said, all of them are innovators, some on the dais, some off the dais. And as always, I find myself, I am the only patient among all the doctors and innovators sitting here. So thanks once again to all of you for coming here for this event. Today, National Technology Day, anyway, we are celebrating. I understand that it is Mother's Day also. It is celebrated as the second Saturday and Sunday of every May. So I'm not saying not many mothers are here, but greetings on this Mother's Day also. And today again, we have all these fascinating innovators whom we are going to listen. But today's day also, Technology Day is one part where we are celebrating Pokhran 2. But today, that IBM Deep Blue defeated Gary Kasparov for the first time, I think. Otherwise, Gary Kasparov always used to beat computer in chess. So it is the first time computer defeated Gary Kasparov. That was one event. Then another event was Atlantis Space Shuttle. You must have heard about space shuttles, which is now discontinued program from US. But it went on this very innovative mission of repairing Hubble Space Telescope. So that way also today's day is very remarkable in that sense, because first time Atlantic Space Shuttle went, and it was its last, I think, last flight of Atlantis, and tried to repair Hubble Space Telescope. So that was also a very innovative event.
repairing something in space, and it was successfully repaired. That was the another fallout of that. Then ISS, all of you know, International Space Station, which now India is also planning its own space station. So that resumed its long flight experiments. Otherwise, people used to come back within a day or two. But for the first time in, I think, 2000, they started long haul experiments on ISS. So that way also today's day is remarkable. Maybe Asta may tell us more about all these events, having got exposure at NASA. And for the one more innovation was that Thomas Alva Edison invented an electric pen in 1876. And after 15 years of that, 1891, it was converted into a tattoo machine. So that was also a very new innovation in that sense. So a lot of events having happened today. Today is also birthday of Mrinalini Sarabhai. We celebrate Vikram Sarabhai as the father of India's space program. But Mrinalini Sarabhai, her other half, her birthday is there today. So all in all, a very great day today, celebrating National Technology Day with so many of you here, 31 colleges, 17 of them from government of Gujarat, and 217 students. So I once again welcome all of you. Of course, I'm going to bore you after the speech of our chief guest. Before Tapan gives his fascinating speech, it's something about Space Application Center also, because having all of you with such a captive audience, I cannot resist myself from telling you something about SAC also. Of course, Tapan has played a major role in developing SAC, so he will not mind it if we delay his lecture for some few minutes. So once again, welcome all of you here. Thank you. Thank you, sir, for your words. Now, I'm pleased to introduce our chief guest, Dr. Arvind Ranade, Director NIF, National Innovation Foundation. Dr. Ranade earned his MSc in Space Sciences from Pune University and doctoral degree in Astronomical Spectroscopy from IUCA. Over 17 years of services to Vigyan Prasar, Dr. Ranade has made significant contributions to scientific education and research. He is a recipient of several awards, including Leelabai Pitkar Award in the year 2000, Acharya Shri Award in 2013, and Irada Vigyan Puraskar in 2017. I request audience to please give a huge round of applause to Shri Arvind Ranade. Good morning. Thank you for the introduction. Director of Space Application Center, Dr. Nilesh Desai, the former director of SAC, Dr. Tapan Mishra ji, my good friend, I think over more than a decade now, a good friend, Dr. Narottam Sahu, with whom we got a lot of opportunities to work together on the various aspects of science communications and the R&D aspect of science and technology. The chairman, Dr. Jolly, who is leading this National Technology Day Celebration Committee, all the distinguished faculty members, the invited speakers, those who are going to speak, share the experience with all of you. Very charming, I would say, the students, the future of India for tomorrow. And as I was told, there are, I think, more than 30 community centers from Gujarat and many other institutions are listening to this live broadcast through the various channels. Today being a National Technology Day, it gives me an immense pleasure to stand in front of you. The reason is very, very obvious. I'm standing in the campus who has actually proven and has made all of us realize
the very good, excellent example of technologies demonstrations by the ISRO, and I am in one of the campus of ISRO. That gives me a great pleasure to talk and interact with you. That too, we just completed a silver jubilee of National Technology Day last year, and we are in a 26th year of National Technology Day. I think what is important for us to realize, I think when Dr. Jolly was talking about what we are and how we have started and how all our traditional knowledge and importance all make us realize what we are, what we were, and what we are. When it comes to the discovery of a zero, many a times people say that Bharat ne kya diya? Zero hi to diya. But I think when it comes to the decimal system, I think without zero, nothing can happen. And that is what the importance when you look at the counting, arithmetics, and anything that we look into. So what makes us realize on this auspicious day that the history matters for every nation? And we are the only nation across the globe which has a rich tradition and knowledge. And I think in a recent 10 years of time, we have really made realize that what is the Indian knowledge system is all about. If we look at any sector of the socio-economic development, whether it is architecture, whether it is a kind of a communication, whether it is in terms of the what you call it as a transportation, everything that you look into, India has played a significant role. And that makes us realize that as we keep on progressing, it becomes important for all of us to realize what potential we have and how are we going to make the world. On this today's day, especially when we talk about the 11th of May, when we are trying to celebrate the Technology Day, which has a very, very important themes to speak about, which is given by National Council for Technology Development by the Government of India. Every year they give us a theme to celebrate. And today's theme saying that from schools to startups and igniting young minds to innovate, which has a very specific reason I consider. Because today we are in the 21st century, we are in the year 2024. If we look at what all has happened over the last 300 years after what we say is about the industrialization or what we call in terms of the revolution. Now, what we have come to the situation, if we look at the 300 years of technology or 300 years of science and technology, the time has come to realize the importance at the same time, the threats that has come out. We are in the time where is the climate change is giving us a warning. We are in the time that we have to realize what are the threats that which are coming up. And in a days to come, we are going to have a lot of shortages, isn't it? When we look at the kind of food security, the land is not going to be increased. The natural resources are not going to be increased. Then what is the way to sustain? And that's what I think the 17 SDG goals put up by the United Nations makes us realize that if we are not going to awaken at this particular point of time, then the days are not going to be very far that we are going to have a big threats in days to come. So what is the solution? The solution lies in the innovation and technology. As and when you have solutions which are coming to tackle those problems and come up with the innovations, then perhaps we are going to have the solutions and able to make it. And when it comes to the National Innovation Foundation, when we try to look at the school to startup, I feel very proud to stand in front of you, the institution, which is basically working to ignite, to spark, to nurture those talents right from the schools to the people who have never gotten exposures to be going into the school. That is the strata, that is the whole spectrum that National Innovation Foundation works in. When we look at the kind of problems that we face, and we believe that the solutions actually sparks to the very young mind. जब हम इस तरीके की बातें करते तो ऐसे कई सारे मैं एग्जांपल्स आपके सामने शेयर कर सकता हूं कि जिसका सॉल्यूशन जो है वो बच्चों ने दिया है.
जब हमारे देसाई जी बोल रहे थे कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन क्या है, मैं आपके साथ 2 या 3 ऐसे एग्जाम्पल शेयर करता हूं जो शायद हम हमेशा सोचते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो अपने करिकुलम के अलावा अगर आगे पीछे की नहीं सोच पाता है. And that's where I feel that role of National Innovation Foundation comes into the picture. Dr. Narottam Sahu spoke about the innovation, and we have a wonderful kind of an initiative by the Department of Science and Technology in association with the NIF. It's called the Inspire Manak. And Manak, we all know, Manak is a standard that we can define. Manak also has what we call the abbreviation, which stands for Million Mind Augmenting National Aspirations. So what does it tell you? I give you a small example, an example by one of the school-going child named Shalini. शालिनी ने अपने घर की प्रॉब्लम्स जब अपने इस इंस्पायर मानक के साथ शेयर किया तो आपको यकीन नहीं होगा the idea, the innovation, the spirit that has come to the mind of a Shalini has become a startup today. I share the example, what she has gone through. When she was living in her house, उनके दादाजी की जो दर्द है उन्होंने देखा और हमारे इंस्पायर मानक के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शालिनी एक्चुअली इंस्पायर मानक के पहले एनआईएफ इग्नाइट करके कार्यक्रम कर रहा था, उसमें से शालिनी का एग्जाम्पल आता है. शालिनी अपने घर में जब दादाजी का दर्द क्या था, वी ऑल नो एट द एज ऑफ 70 or 70 plus a lot of elders will pass through the arthritis problem. घुटने में दर्द होता है, right? And what happens? To walk around on the plain level, you use the walker, isn't it? जब वो दादाजी प्लेन फ्लोर पे चलने की बात करते हैं तो वॉकर्स तो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, बट दादाजी को कभी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने की नौबत आ गई तो वो वॉकर काम नहीं करता है. So idea that Shalini gave to the NIF through our Ignite competition was to share the idea कि ये मेरे दादाजी का दर्द है और मेरे दादाजी की तरह कई सारे लोग होंगे जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा. क्या हम ऐसे वॉकर को एडजस्टेबल वॉकर बना सकते हैं? And that was the idea which we got it under the Ignite program of NIF. And I must tell you, we are very proud to say the same Shalini who gave the idea, we at the National Innovation Foundation with our Fab Lab, that is a fabrication laboratory which we have very close to the Gandhinagar. All my colleagues, all my engineers sitting in the laboratory, in the Fab Lab, started working on developing the prototype, what the Shalini has put up a challenge in front of us. And I'm very happy to share, after the iterations of work on that, I think around 7 to 8 iterations, लगभग 6 से 7 prototypes बनाने के बाद, उस शालिनी के दादाजी का जो problem था वो हमने solve करने में सक्षम हुए. And that particular adjustable walker has become a technology transfer, and that to a very well-known company, I think, when it comes to the what you call it as the instruments into the orthopedic, which is a nothing but company का नाम मालूम है किसी को? Visco. That is what the kind of, you look at the spark that Shalini has come up with. She gave a problem of a societal problem, what she has faced in. So that is what is the potential of a young mind is. And I consider the theme that today, which is given to the national technology, is very apt. I give you one more example. And why am I sharing this? When it comes into the school, we always feel that students are only bound to go through the curriculum, pass out the exams. But unless and until the platforms like Inspire, Manak or Ignite will not be there, such sparks and such beautiful and intelligent students will not get a recognition. Another Chaya ka example deta hu. I think many of you must be aware, especially जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए दोपहर की छुट्टियों के समय जब पानी पीने की बात आती है तो उसमें एक टंकी होती है और एक ही लेवल पे सब जगह नल होते हैं जिसमें पानी पीने की समस्याएं होती हैं. और अब सब स्कूल में जाते हैं तो कुछ किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट बड़ी होती है. तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो छोटा है उसके लिए तो पानी पीने के लिए नीचे कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पानी पी पाते हैं. जो बहुत ऊंचे हैं उनको इतना झुकना पड़ता है कि वो शायद उनके लिए मुसीबत हो जाती है. एंड दैट वाज द अनदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हिच वाज बीन आइडेंटिफाइड बाय अ गर्ल कॉल्ड छाया, that too from a government school.
and she shared this idea. क्या हम टंकी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से मेरे जैसे हाइट वाले, because Shaya was the very, no, I would say the very small in the height, she was not able to drink the water. तो मेरे जैसे बच्चों के लिए भी समस्या का समाधान होगा और जो टॉल है उनके लिए भी होगा. And I must tell you what kind of compliment she got during one of our program happened in the Rashtrapati Bhavan in Delhi. Chaya, when then the president of the country, Pranab Mukherjee, वो जब उनके पास आए तो छाया को जब पूछा कि भाई क्या इनोवेशन है, देन शी सेड कि सर ऐसी समस्या थी तो मैंने इस प्रकार की आइडियाज दी. तो प्रणब मुखर्जी ने उनको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, छाया अगर आप मेरे से पहले पैदा होते तो आपकी आइडिया मेरे लिए भी काम आती. That was the spark. And I tell you the what happened, the idea given by Chaya, now many schools are implementing. What the idea was to just tilt your what you call as a water tank by diagonally, so that you can put on the tabs at the different levels so everybody is able to drink the water. Now look at the, I would say perhaps once we go into the college or maybe become an adult, we feel yaar ye aisa kaisa ho sakta hai. But look at the idea. That is what I feel. The young minds are more connected to the society than perhaps we are. They realize they face through the problems and they have daring to speak and share with the others. And that's where I feel this is another example that you could see. We have another third example of Mr. Sukanta Mandal from Uttar Pradesh. During the COVID time, we all were scared of touching even anything. And that was the time where managing the waste has become a very difficult ball game together. What he has gave the idea to have a garbage picker without any intervention of a humans, especially the body parts. And I tell you, the same idea has converted into the startup. There is a Srijan who has taken this idea. The idea was to have a garbage picker in such a way that you can very easily pick the garbage and put it into the dustbin, which is having its own mechanism, and that has been transferred to the Srijan Innovation Private Limited. Now this particular technology is again not only transferred, now that boy is getting the royalty out of it. So the point to mention here on this particular day, that National Technology Day gives us an idea to remember all those development and all those remembrance of the people or the sparks that the young minds have. तो ऐसे समय पे अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें उन सब बातों को याद करने के लिए प्रवृत्त करता है, जिसकी वजह से आज के दिन का महत्व भी समझ में आता है और आने वाले समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा भी हमें देता है. और जब हम सैक जैसे कैंपस में बैठे हैं, जॉली मैम ने और देसाई साहब ने बताया, what ISRO has done has actually given a new thought for the space work or space applications, that how with the minimum amount of investment, how the grade that you can achieve. And sometimes यही कहा जाता है कि आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके ऊपर कुछ निर्बंध भी होते हैं. When you have no money to do, with the small amount of money, how you can do, that can only come when you really start working on those problems. So I think this is what we need to realize. और especially जब हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन पे इस चर्चा करते हैं, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनके पास हर तरीके की समस्या है, और जहां हर तरीके की समस्या है वहां हर तरीके के समाधान भी मिलने की आशा है. और मुझे इसी कारण लगता है कि जब हम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से काम करते हैं, हमने तो बात की कि जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए, हम ऐसे लोगों के लिए भी काम करते हैं जिन्होंने स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा है. Those who have never got a chance to be in the school, but kind of innovations that they have come up with, we are for them. We do a lot of work. Today, I feel very happy to share with all of you on this very important National Technology Day, that today we holds about more than 600 granted patent, and all the patents are on the name of the grassroots innovators who even doesn't know how to write, how to read. So we work for those people, those who have never been considered as a part of the economy in a day, in the present day. और अगर हम जैसे संस्थाओं को अगर ये काम करने का मौका मिला है, तो we feel very proud to say. And I must tell you, out of these all innovations that we have been doing,
And Professor Desai ji mentioned kar rahe the ki Anil Gupta ji, what the man he is, who has realized the potential of such people. And today we feel proud that among them there are dozen of innovators who are being awarded with the 4th highest civilian award by Padma. And that is where the National Innovation Foundation walks in. On this, especially the occasion where all of you and the people who are listening to us, I must tell you, the real spark, real ideas get germinated at the very young age, and we are there to help you out. On this particular day, I must tell you, we at the National Innovation Foundation are there to help you out. You please come up with the idea. We are there to take the ideas to the forward. And I tell you, none of the idea that we try to patent on our name. It will remain on your name as long as the idea has a spark to take it to the forward. I think that is what the need of tomorrow. And we all need to work on this. When we look at by 2047, we have to become a developed nation. Then the all potential lies in the work and spirit that we work in. तो मैं ऐसे occasion पे मैं सबसे यही आह्वान करूंगा कि इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे के ऊपर उपलक्ष्य में अगर हमारे पास इस तरीके की चीजों को ध्यान देने की अगर थोड़ी सी प्रवृत्ति बन जाती है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हर उस समस्या का समाधान हमें मिल सकता है और वो सिर्फ भारत के अंदर ही मिल सकता है। और बहुत सारे बात हम कहते हैं कि हम सिर्फ लोक संख्या या आबादी में ही आगे हैं, ऐसा नहीं है। When we try to count the number of things at the global level, we stand quite high. But ultimately, that has to be converted into what is going to be the applicability of those technology. On this occasion, I feel it is a great honor for me to be stand in front of you to speak about what the importance of National Technology Day is. And on this day, I must invite all of you to please come to the National Innovation Foundation and see the kind of innovations that we have exhibited in our small campus. We don't have a big campus like SAC, but certainly we are looking forward to have a showcase of such innovations in days to come. And I really thanks to the organizers, especially Professor Desai, Jolly ma'am, and all the organizing team members for giving this opportunity, for interacting with all of you. And on this particular day, I look forward that all the spark among the youngs have a potential to get the good kind of an wealth to the nation and to the person as well. With this, thank you so much. Dhanyawad. Thank you so much, sir, for thank you, sir, for sharing experiences with us. As a token of thanks, we would now request Nilesh Desai, sir, to present a memento to Ranade, sir. Thank you so much, sir. Now I request Nilesh sir to give an overview about research activities at SAC. Sir, please. With due apologies to Tapan Mishra, I'll just try to give a brief overview. Generally, I'm never brief. That is what Tapan also used to say always. So, but today I will try to match that. So, overview of SAC technologies, new vision for research and innovation. So I will go very fast because time is limited. So, what all SAC is and what all SAC is doing, and what you are going to see today after this function is over. So that's why I thought that it will be appropriate. Next. All of you know Dr. Sarabhai gave the vision of India space program, and incidentally he belonged to Ahmedabad. Of course, he died early and the headquarters of ISRO got shifted to Bangalore. So, of course, we didn't like that. But we may try to hope that it comes back someday. After that, Dr. Satish Dhawan took over. Dr. Kalam, all of you know. In fact, we are remembering Kalam today. Then
And below you are seeing Professor Yashpal, who was our first director of the center. You just saw his bust here when you entered this exhibition hall. And he was our first director. I am the 13th one, and 13 is a very lucky number for me. Here you see a rare picture of Dr. Sarabhai and Kalam discussing something at Thumba. Now that those days Ahmedabad and Thumba were the happening places for Indian space program. And Sarabhai was from Ahmedabad, and his wife, whom we remember today is her birthday. She belonged to Thumba, in fact, Trivandrum. Next. And Sarabhai used to say that if you want to make satellite, do various space research, then first try to know that how satellite works, means how satellite is used for applications. So that's why we started with making rocket going on a bicycle or bullock cart, that is all well known. Then we started with this very innovative program of SITE, uh, then STEP. So we start to use satellite for TV broadcast. So that was one of the most mass mobilization program those days, 1975. Some of you will say that on today on my mobile I'm seeing TV. What is so great in that? Those days, 75, when even electricity was not there, 2,500 villages used to receive TV broadcast. So that was the uniqueness of that program. Then STEP, we tested communication between one place to another using again a Franco-German satellite. Then we had this remote sensing experiment using balloons, aircraft, helicopter, all those things, which was started by Dr. Pisarotti at PRL. So that's how India space program evolved. Next. So today, this is what is Indian Space Research Organization. All of you know that, so I will not dwell on that. We work directly under Prime Minister with Space Commission guiding our activities. And there are some structural changes in last couple of years. I'll come to that. But each of the places has its own ambience, whether it is Trivandrum, Bangalore, Ahmedabad, or Mahendragiri, which is near Kanyakumari, or Dehradun, or Hyderabad, or Sriharikota, from where we do the launching. So each place is a unique place. So if you happen to go to all these places, please try to see these places at least. And of course, SAC is unique among all of these. Why? I'll come to that next. So today, this is what is ISRO 13,000 crore budget, is 17,000 employees, and we are steady. Almost last 10 years, our strength is only 17,000. So we are only replenishing the superannuating people. So we are not adding new people, but the activity has become almost 5 to 10 times bigger than what was it 10 years back. So how we are managing it is by outsourcing, involving more stakeholders into that private sector, many contract people and all those things. Next. And but surprisingly, our share in the international space market is only 2%. So that's why now Honorable Prime Minister feels that it should be higher. India wants to be a superpower. So from 2, at least it should become 5, if not 10. So with that idea, now some changes have been brought in. Next. So these are the changes. We have now a public sector unit called New Space India Limited. It's had uh, uh, it is earlier Antrix was there. It is still there, but now this New Space India Limited will be the workhorse through which ISRO will be working. Indian, Indian National Space Authorization Center, that is in space, has been set up with headquarters at Ahmedabad. So that is another good thing which has happened. So what we lost when Sarabhai died, with headquarters shifting to Bangalore, it is something we have got back with in space headquarters being here in one of our campuses. And it will support startups. That's why its importance for all of you is that it will support innovation and activities related to NGPs, non-government enterprises, as well as startups from students. And new space policy has come up, so data is available now free of cost to everybody up to 5 meters. So many changes are there, so that will open up a lot of applications downstreams where you can utilize it commercially. So please try to see some of those aspects, so that if you are thinking of setting up your own startup or innovative application, then this is the way to that. Next. New space policy has also been approved by government. This is our scorecard, so looks very impressive. But what is not revealed here is that we have our share of failures. But ISRO's one uniqueness is ISRO culture, we call it, or SAC culture, that we try to learn from failures. We don't get deterred by failures. Failure is first attempt in learning. Fail is first attempt in learning. So we never get deterred by failures. Failures will always be there. Space is a risky business. Next. This is SAC, which you are going to see today. So, and as I said, SAC is unique organization, unique institute among all ISRO centers.
Why unique? I'll come to that. But what big antenna you are seeing? It is a 14-meter diameter antenna built initially got built by Dr. Sarabhai in 1967-69 time frame. It was built by Nippon Electric Company, NEC Japan, as it is known today. And this was the only building in all this area. Everything was a forest or jungle. उसमें ये एक ही बिल्डिंग था एंड टुडे इस जगह पे वी हैव 50 buildings. So you can imagine the growth which has happened for development. And now we have two more campuses near Bhopal, opposite to Delhi Public School. So an in-space headquarters is also there. We have a very good exhibition which anyway you'll be seeing today. And Delhi Earth Station is another unit which is in New Delhi but affiliated to Space Application Center. And it has again a uniqueness like this Earth Station which you are seeing. It is the first communication Earth Station of India. Similarly, Delhi Earth Station is the place. It is again, it has a heritage importance because Indira Gandhi used to go to this place and address the whole country those days. Today, sitting at your home on your mobile, you can do VC, video conferencing with anybody in the world. But those days, even Prime Minister has to go to this place. Next. Why SEC is unique? Because what is everybody is fascinated by the launch of a rocket, but rocket works for only 15 minutes. It is a vehicle, as its name suggests, launch vehicle. Similarly, satellite is a platform on which the thing which actually does the work, the instrumentation or the payload or the sensor, Nitbar. So that is being developed here. So the heart or the brain of the satellite gets developed here in Space Application Center, and its end product, that is application, Upyog, that also happens from here. And in between, there are many steps, data processing and many other things. That all things also happen here. So the brain of the satellite and the end product of the satellite, all activities happen in this center. So that way, this center is very unique. Of course, we work with industries, SME, MSME, academia, like you, all of you people, research institutes, and of course, International Space Agency. So if you see our human resource strength, we are almost 2,000 regular employees and another 1,500 contract people. And we have people from almost all domains, whether it is engineering of different types or science uh, domain expertise in various fields, whether it is biological, physical, chemical, all type of sciences. And of course, we have social researchers also. And as I said, we have ITIs, diploma holders, graduates, postgraduates, and doctorates also. Next. So this is how our remote sensing program evolved. So we work for land, water, high resolution cartography, oceanographic application, and weather prediction or climate related observations. So our capability improved from 1 kilometer to zero point 0.3 meters. So this is how research and innovation help us to achieve what we are today. So today whole campus would appear as one dot in an image. Today we can read a number plate also from a height of 500, 600 kilometers. So that's how research and innovation has helped us to achieve this technical capability. Next. So this is how our payloads have evolved, especially electro-optical camera payloads. Next. And similarly, radar domain, when Mr. Tapan Mishra was the pioneer of this radar technology in ISRO. So we started, of course, you'll be surprised to know that our electro-optical program, camera development program, and radar development program started almost at the same time in uh, late 70s. But we took almost 40 years to mature this radar technology because it is a dual use technology and nobody will give you this technology. You have to do everything on your own. So everything was an indigenous effort. And that's why it's the importance. So what Tapan and his team started long back, 40 years back, today it is we are the world leader in radar technology. So that itself shows the capabilities which we have developed over the years. Next. So this is how, so radar also we have moved from few hundreds of meter resolution to zero point 0.3 meter. That is from 1 kilometer to 1 feet. That is what the improvement in resolution is concerned. And the miniaturization of technology has also happened. So this right hand side, you're seeing the model which we offered to our chief guest, a radar imaging satellite. And below that is a satellite which we bought, the first one which we bought from Israel at a cost of around 800 crores. And today we are making it in within 150 to 200 crores. So you can imagine how what improvement we have made as far as this technology, and everything is indigenous. Next. Of course, for generating images from the sensors which work in space, you need to do a lot of processing. So various high performance computing related innovations also happened here, whether it is
image classification, super resolution, multi-resolution imaging, uh, image enhancement, all these things. Next. And now the trend is towards analysis ready data. So initially we had raw data from satellite, now information products, data products, now analysis ready data, and future is going to be AI ready data. So data comes directly, you apply your AI ML algorithms and you get the information out of that. So this is how technology is evolving. And this is one area where lot of opportunities for startups. So please concentrate on this particular area, downstream application, which is going to be almost 80% of the space market. People don't realize that, but this is where the money is actually. Next. And these are our websites where you see various applications of the work which we do, especially related to remote sensing, meteorology, oceanography and all. Please do visit this site. You will get more ideas about innovative ideas about research or further activities. Next. And why I said that we are now world leaders in radar, that NASA came to us, to ISRO, to Space Application Center. JPL is considered to be world's best aerospace laboratory in California. So they wanted to collaborate with our team here, which was built by Tapan Mishra. And we started this activity in 2012 as a joint collaborative project, and it is almost ready now. And we are soon going to launch this particular satellite, NISR, NASA ISRO Space Observatory. So it is going to be one of the unique sensor in the world, and the whole world is eagerly looking forward to this launch. Below you are seeing the radar developed by our team here. Next. And communication program also has evolved considerably when we started our first Insert One series of program, which we uh, helped in communication from one place to another, data transmission and many other things. So that was given as a turnkey project to Ford Aerospace those days. 4 satellites were bought from Ford Aerospace as per our design. 2 of them worked, 2 failed. And today we are building our own communication satellite and launching it also from our own Sriharikota. So, and now we call it GSAT series. So this is how our communication program INSET 2, 3, 4, all our indigenous satellite built by us, of course, launched from French Guiana or American space launches. But today, GSAT series, all we are making it here and launching it from our Sriharikota only. Next. And today, generally, communication satellites are all geostationary satellites. All of you know that at 36,000 kilometers, it will appear stationary, so it will help in communication. But today, the trend is of LEO satellites. So LEO satellites will be used for communication and especially broadband connectivity through space. And its importance can be realized from that in last 2 years, the Russia-Ukraine war is going on. Russia has devastated Ukraine. It has bombed it like anything. So everything is devastated there. All TV towers, communication tower, everything is gone due to this bombardment by Russia. But today also, TV is working there, internet is working in Ukraine, thanks to Starlink of LEO satellites. So that shows the importance of this satellite-based communication, LEO constellation. So this is the area where a lot of things are happening. And the last one you are seeing, Blue Walker. Your smartphone becomes a satellite phone also. So many places nowadays you don't get network when you go, especially to rural areas or remote areas. You don't have to worry about that. Once this type of technology goes into space, your smartphone will become satellite phone. So you don't have to worry about connectivity. If your towers are not there, automatically it will switch over to space-based communication through this type of technology. Next. Similarly, GPS, all of you know GPS, navigation system. 90 to 95% of activity which you do in your daily life is governed by or controlled by, in some way influenced by navigation, and especially GPS. All of you know GPS. But during Kargil war, our soldiers faced a lot of problems. So we are under control of GPS, which is an American system. So after that, government decided that why not we have our own navigation system. So with that, this idea of IRNS has got developed, that the Indian Regional Navigation Satellite System. Now it is called NAVIC by our Honorable Prime Minister, Navigation with Indian Constellation. So you are going to hear a lot about NAVIC. So because instead of GPS, we will urge you to use NAVIC instead of GPS. And even if you need to use GPS, at least augment it by using NAVIC also. So this is one technology about which we are going to hear a lot. And as I said, 90% of activity we do in our daily life is governed by this particular technology, which is navigation system. Next.
So these are some of the applications which we have developed. So tracking of our locomotives or railway, all the Rajdhani and Satabdi Express are right now tracked by using this SATCOM and navigation technology. Similarly, fishermen going out into deep sea for fishing. So coastal surveillance as business. So we can develop in India only up to KU band earth station. So going higher frequencies, we are right now importing only, which are very costly items. So 250 crore earth station for GSAT 20 satellite we already bought. But in future, we are going to develop this indigenously. And you are we have developed this terahertz technology for astronomical observations. So that is another new area as you move towards higher and higher frequency ranges from QV, KU, Ka band to onwards to terahertz. That is going towards sub-millimeter and millimeter wave up to 1 terahertz. So this is another area of research and innovation. And of course, you are going to right hand side. What you are seeing is a opto-quantum communication. This is going to be a major area of research in coming days. Already, Prime Minister under initiative has announced a 8,000 crore national quantum mission. So under that, lot of things are happening. ISRO has taken a lead in that in quantum key distribution. So today, there are a lot of cyber frauds happening. So your password gets hacked. There are cyber frauds happening. Your money gets lost from your account due to hacking or your password getting theft by somebody. So all these things will be thing of the past. Of course, I'm talking of a future scenario where your password, which is coming as a OTP on your mobile, that will come through this quantum channel, through light photons, and nobody will be able to hack it. So this is going to be the technology of future. We are shortly going to launch a satellite with this technology and demonstrate this quantum communication. So this is going to be another innovative area of research. Next. And of course, moon landing and all, these are very exciting. Everybody gets fascinated and excited by the India. ISRO has been doing Chandrayaan 1, 2, 3, all this, all of you know, so I don't have to repeat. Next. This was Chandrayaan 3, where SAC contributed a lot. Next. This is how the soft landing happened that day on 23rd August. And as I said, now we are going to celebrate that day. So it came from 30 kilometer to 7.4 to 6.4 to 800, and then next moved vertically down to 150. And a lot of the sensors names which you are seeing on board, they were all developed by Space Application Center. And I personally feel that SAC has played a major role in soft landing of this Chandrayaan 3 mission. Next. So after that, what you don't see on your TV. Next. This rover came out of the ramp and did all the experiments for almost 10 days, 10 Earth days, equivalent to one moon day. 14 days, and around 102 hours it moved around the moon surface. Next. And these were the contribution of SAC. As I mentioned, I personally believe that SAC played a major role in soft landing of this Chandrayaan 3 lander. So all the cameras were built by our sensor development area. The site selection for landing at South Pole, that was also done by going through various moon images for almost 5 to 7 years of study has gone into that before we selected the site where we'll be landing. There was a main site, then there was an alternate site, and if nothing works, then we'll have a autonomous landing. So all these things happened here. The radar altimeter, which was very crucial in getting the height information,
when the lander was landing. So that was also developed by Jolly Madams and her team. Similarly, HDA processor, digital system, all these things, which was the brain or the heart of this landing system, that was also developed here. Next. So, and this camera, which is going into the orbiter of Chandrayaan 2, which is still orbiting around Moon, it was supposed to work for 1 year. Now it will work for almost 7 years. It was launched in 2019 as a part of Chandrayaan 2. So this was when our lander landed. After that, the image taken by NASA's uh, LRO, that is Lunar Reconnaissance Orbiter. You see the image, it is not that sharp. Next. You see the image taken by our camera, that is the orbiter high resolution camera. It is 0.25-meter image, which is very focused, as you can see from this. Next, Shiv Shaktipat. Now, National Space Day will be celebrating. Next. Of course, after that, we had Sun mission, so that is also working fine. We played a major role in making this WELSI visible emission line coronagraph related electronics development all happened in this center. And these 7 sensors are there from different organizations. And this mission was also very crucial because we were going to moon, we traveled 384,000 kilometers. Here we traveled 15 lakh kilometers going to that Lagrange point and then inserting into that orbit. That was a major challenge. So all this ISRO team successfully did, and this mission will now work for next 5 years. Next. And now after Chandrayaan 3, Chandrayaan 4, another thing. So one lunar polar exploration mission, which we are going to do in conjunction, collaboration with Japan. And the uniqueness of this is that during Chandrayaan 3 we landed at 69.3-degree latitude. Now we are going exactly at 90-degree latitude. The landing also will be very precise within with the accuracy of 10 by 10 meter, and the lander will carry a 350 kg rover. Right now our rover was only 30 kg. So you can imagine one order of magnitude of higher capacity rover will be there in this mission. So all in all, it is going to be a very interesting and a very challenging mission with this type of technology and landing at exactly at 90-degree South Pole. Next. Similarly, Chandrayaan 4, all of you would have heard our chairman mentioning about landing on moon and bringing soil or rock samples from there. So return sample mission. So that is again going to be there in next 4 to 5 years. Next. So this is how it going to work. So we'll have 2 missions, 2 launches, which will go. There will be some orbiting module around moon. One module like lander will land, then something will come back out of that, which is again dock with the orbiting mission, and then the whole ensemble will come back to Earth and get separated, and only the re-entry module will finally land back on Earth. So this is how various technologies are yet to be developed, but we are working on that, and hopefully within next 4 or 5 years. So this also opens up lot many new technologies where private sector also is also going to be involved in a big way. Next. Then we have Mars landing mission. Landing on Mars is easier than landing on moon because there is a thin atmosphere there. So you can use parachute and other technologies. But going there for 9 months and then landing, that is the biggest challenge, which is going to be there. So again, this is going to be again a very challenging mission. Next. And of course, now we are doing Gaganyaan, taking a Indian astronaut, or we call it Gagannaut, into the space and then safely returning him back after moving there for around 2 to 7 days. So this is going to be a real challenge. Already last couple of years we are working on that. We were supposed to launch this mission by the 75th year. That was by 2022. We started in 2019, but it is easier said than done. And in between COVID also came. So it has got delayed, but within next couple of years now, we'll be putting man in space. Next. So this is how this mission is going to be. So we have almost all the technologies available with us, but we have to change from an engineering or technology centric organization to a safety centric or a human centric organization. The life of human being will be involved. So you have to assure that everything will be very safety critical, means everything is safe. You take the man into space and then bringing back safely onto the earth. And mostly the landing may happen on the Veeraval coast if everything works out well. We are examining various possibilities, Andaman, Nicobar, Veeraval, or Bay of Bengal. Next. So this is how it is going to be. 2 to 3 astronauts will go in that mission. And initially, maybe 1 astronaut may go. And the major challenge is ensuring 100% crew communication. Right now,
with all the available capabilities, we can achieve only 35% of crew communication. So from 35, we have to bring it to 100%, but not for a single moment we are going to leave astronaut alone. He will be always in touch with Earth with us. So that is going to be a real challenge. So he'll remain in space for 1 to 7 days at a height of 400 kilometers, move around Earth, and then come back after that. So re-entry is going to be another challenge. And for ensuring all this communication, we'll have to have arrangement with various other space agencies. And the most critical part is launch another 2 data relay satellites. So they will be, so because Gaganyaan will be moving all around the Earth. So it will be visible only 2 times in the morning, 2 times in the evening on India. Rest of the time it is moving somewhere else. So it will communicate with this communication satellite, that is the data relay satellite. And from there, it signal will come back to Bangalore. So that way, the whole communication chain has been arranged to ensure 100% crew communication. Next. So this is the challenge, as I already told. Next. For that, we are making various technologies, crew cabin related and communication related work happens in this center. We have developed the training simulator because astronauts are to be physically trained. Already they are undergone training in Russia, but now they have come back and now they are undergoing various technical training where we have developed various simulators that was done by the SAC team, and they are being used to simulate the environment which they are going to find in space when they are sitting in that crew cabin. Next. These are the astronauts, all of you know that. Prime Minister announced their names. Next. And lastly, this Bharat Avkash Station. It is equivalent, a smaller, like an international space station. ISRO has plans to develop this. So it will be built in space. So it is like building a building in space rather than Earth and then launching it. So module by module will be launched. So by 2028, first module will go, followed by other modules, and it will get integrated in space itself. Next. So these are all various technologies which are going to be there. Many of them we don't have, so we will need support from various other private sector, and of course startup can play also a role into doing various activities, small or big, whichever way. And of course various other players will be there. So this is going to be our ultimate as far as space technology is concerned. Next. Space station, space tourism. So these are all, by the time you people join ISRO and work for that, this will be the reality. Next. And of course, we try to give a lot of support to various startups, academia, and human resource development. So ISRO is always there for hand-holding all of you. So if you have any ideas, as Mr. Ranade also suggested, bring it to the concerned people, whether it is in space or NIF or to ISRO directly, and we'll try to see how it can materialize into a concrete thing. Next. So these are all various avenues open, whether through, we can also give technology to you to further develop onto that. Next. These are some of the facilities which we have, which will have a look when you visit some of these areas today. Next. And these are some of the things which you are going to see. So I will not dwell on that. Next. And this is our other campus where again we have Asia's largest, biggest clean room. Even China doesn't have it with whatever information we have. So that these are all facilities. When Dr. Mishra was the director of the center, he gave that idea to develop this particular other campus, and he played a major role in getting all these things for us here. So thank you, Dr. Mishra, for this. Next. And InSpace is there now located at one of our Bhopal campus. So you can approach InSpace. If you have any idea related to your startup, you can always approach InSpace, which is now going to be the main promoter, enabler, authorizer, and regulator for all the space activity for startups as well as private sector. Next. So these are all some of the activities which they are already doing, and this will feed into whatever is. If you have any idea, you have to first approach InSpace, and even if you come to us, we will direct you to InSpace and give you the right direction for setting up your own startup or further activities related to that. Next. And these are all activities where we can contribute. As I said, lot of scope is there in downstream applications, which are the 80% of activities. Thank you. Thank you so much, sir, for your very encouraging and informative talk. And now I request all the dignitaries on the dais to take their seats
in the front row of auditorium. Tapan sir, kindly be here. So you kindly please. Dr. Tapan Mishra, we owe him a special debt as he has been our beloved director. He has started his career here in 1984, and since then he played a pivotal role in growth of microwave remote sensing payloads. He is widely known for design and development of synthetic aperture radar, that is SAR, of RISAT series of payloads and Chandrayaan 2 orbiter. He was also the principal designer of CARB and radio altimeter, which enabled smooth landing of RLV and Chandrayaan 3 lander. He is also the principal architect of the novel sweep SAR of NISAR, likely to be launched in 2024. Presently, he is holding the position of founding director and consultant, chief scientist of startup named CICIR Radar Private Limited, based in Kolkata. He holds number of awards, 8 granted patents, 5 copyrights, and more than 55 papers to his credit. With huge round of applause, please welcome Dr. Tapan Mishra. चेंज करने के लिए full person. Good morning, Nilesh Desai, my friend, and Ranade Saab, Narottam ji, and Jolly. I must congratulate SAC to organize this unique program. And I also like that flyer. I requested Jolly and Nilesh to put it on YouTube, and it's a very beautifully done flyer. I must congratulate the team which visualized it and made it possible. No, innovation is a buzzword now, but why it is so? We take two live examples. There's two neighbors. Because नेबरों पे थोड़ा खटपट होती है, नेबरों पे कंपटीशन होती है, उसमें जेलसी भी होती है, एंड ओनर्स प्राइड इज नेबर्स एनवी, दैट इज आल्सो होती है. तो वो हम पड़ोसी पे देखते हैं, हम दोनों हालत एक ही थी, करीबन 60 साल से लेके 90 साल तक. बट उसमें क्या 1984-85 में देंग जियाओपिंग ने पॉलिसी बदले, बोले ठीक है हम बाहर से तो कम्युनिस्ट है बट अंदर से थोड़ा कैपिटलिस्ट बन जाते, तो पॉलिसी बदलते, और उसमें से ग्रोथ चालू हुई. और एक नॉर्मली गवर्नमेंट में कुछ भी पॉलिसी आप बदले ना, वो करीबन 10 साल लगता है. इतना आसानी से नहीं होता है. गवर्नमेंट बड़ी मशीनरी होती है, ये आपको हाथी को घुमाना जैसा होता है. और हमने वो देख के, और जब पड़ोसी में बहुत डेवलपमेंट होती है ना, तो घर पे बहुत खिटपिट हो जाती है ना पड़ोसी में. तो तभी आप देखेंगे जो 90s बिगिनिंग पे हमारे देश पे बहुत सारे तकलीफ हुई, बहुत सारे मंडल कमीशन एंड ऑल. One thing is political, and other thing it's a society's reflection of their unhappiness with their own self. तो नरसिम्हा राव जी ने 92 में जो बदलाव लाए, वो तो उसका भी असर पड़ने करीबन 10 साल लगे, 2000 तक. बट सरप्राइजिंगली हमने जो पॉलिसी का बदलने का जो असर लाए, वो चलता रहा, और चाइना सडनली बढ़ने चालू हो गया. तो आप देखेंगे 2000 पे चाइना जो इनिशिएटिव लिया, इनोवेशन, उनका स्कूलिंग, उनका कॉलेज, उनका सिस्टम सेटअप पे, एंड जो शेंजन गए, क्या संघाई गए, क्या बेजिंग यूनिवर्सिटी गए, मैंने जाके देखा वो. इससे रिमार्केबल चेंज दे हैव मेड. वी मस्ट अप्रिशिएट दिस.
and that's part of this economy and exponential growth. And today we are actually, it's a $3.5 trillion economy, and China is now approximately $18 trillion economy. तो अब और देखेंगे जो घर पे, आप देखेंगे जो घर पे जो पढ़ाई अच्छा किया है, देखो आपका भाई भी अच्छा पढ़ाई किया होगा, आपका बहन भी पढ़ाई अच्छा किया होगा। ये घर का एक माहौल बनती है, परिवेश होती है, जो पेरेंट्स ने बनाते हैं तो होता है। घर पे कोई चोर गुंडा होता है तो उसका भाई भी बनेगा, चांसेस है। वो देखोगे जब बाप भी करता होगा कोई चोरी, तो वो भी एक माहौल का है। तो हमने जो कामयाबी लेते लाइफ में, ये काफी तरह कुछ तो जीन्स का तो साथ जुड़ती है, पर कुछ भी एक माहौल का भी होती है। इनोवेशन ऐसे है, ये माहौल का। मैं बहुत जगह जाता हूँ, हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए इनोवेशन के लिए, बड़े बड़े, बट माहौल नहीं बना है। तो रिजल्ट जो पैसा हमने डाले, वो पैसा पानी पे गया। तो इसमें बहुत सारे हैं। एक तो मैं विश्वास करता हूँ जो एथिकल वैल्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो आप जो डेटा पे आप चोरी करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी पे भी चोरी हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं है। और एक जो चीज ग्रास्पिंग पावर का होती है, मैं वो बात पे आऊंगा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और एक इंटेलिजेंस जो होती है, एक्स्ट्रापोलेटिव इंटेलिजेंस, मैंने हम जो पढ़ाई के उतना नहीं, हम उससे थोड़ा एक कदम आगे जाके सोच सकते हैं क्या, नहीं, वो जरूरी है। और खुद का हाथ पे खुद बनाने का, पढ़ना एक चीज है, बट खुद बनाए तो उसका शिक्षा पूरा अलग होती है। और एक कुछ भी चीज है ना, हम बनाते, बट कभी सोच के बनाते क्या, हम उसमें कितना सोच लगाते हैं। हम जो बनाने का बाद जो सामान देखते हैं, वो जो मैं पहले सोचा था वही है क्या, दूसरा कुछ है। तो ये बहुत जरूरी है। और रिस्क तो, और इनोवेशन करने जाए तो कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ फेल्योर होगा। इनफैक्ट हमारे देश में क्या फेल्योर का डर इतना रहती है जे हम कोशिश ही नहीं करते। सपोज एग्जाम देके फेल हो जाएंगे तो एग्जाम ही नहीं देने का। हाँ, ऐसे ही है हमारा डिसीजन। और हम फेल्योर से सीखते नहीं कि आप फेल्योर होके, बच्चा इंग्लिश में थोड़ा कम मार्क्स आया तो बाप माँ पीटने लगे, भूल गए जो तो इंग्लिश तो उसका मदर टंग ही नहीं है। तो और गुजरात पे तो बोलना नहीं पड़ेगा, कॉस्ट कॉन्शियसनेस। इनफैक्ट वन ऑफ माय को-फाउंडर हु इज हैपन टू बी माय डॉटर इन लॉ इज ए गुजराती। अब मैं उसका फायदा पूरा उठाता हूँ। और इनोवेशन जितने हम बोलते हैं ना, मेकिंग थिंग्स इजियर, ये कोई सहज होना चाहिए। और जो प्रोडक्शन पे भी सहज हो, यूज पे भी सहज हो, और वो काम किया है। जो बिना काम का होगा तो कोई, वो कितने भी इनोवेशन करो, कुछ मतलब नहीं है। और आपने देखे भी, जो पेड़ जो बाहर में इतने बड़े बड़े पेड़ है, ऊपर 40 फीट दिखता है, थोड़ा अच्छी तरह देखेंगे वो नीचे भी 40 फीट है। और जो जो सीड से जब पौधा बनती है, वो पहले ऊपर नहीं उठता है, पहले जमीन का नीचे जाता है, जहां सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, सबसे ज्यादा दिक्कत है, उसका बाद ही उसका पत्ता निकलती है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आप करने का हो, बड़ा करने का हो, आप देखेंगे जे इनोवेशन पे उसमें नहीं है, जैसे उसमें एनवायरनमेंट नहीं है, वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। आजकल तो मेरे को क्या अभी ये मार्केट पे पता है, फंडिंग ये सब पे मेरे को पता है, ये कितने अभी व्हाइट लेबलिंग कर रहे हैं, बाहर का इंपोर्ट करके ऊपर मेक इन इंडिया करके चला रहा है, ये सब भी चलता है। बट वो लोग सस्टेन नहीं करेंगे, वो क्या सट्टा मार्केट जैसा है, थोड़ा थोड़ा पैसा इधर उधर करके भाग जाने का। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी डायमेंशनल लर्निंग। हमने जो जितने पढ़ाई करके आते हैं स्कूल कॉलेज पे, कंपार्टमेंटलाइज है ना, तुम फिजिक्स पढ़ा है ना, तो तुम्हारा केमिस्ट्री में कुछ ज्ञान नहीं होना चाहिए।
जो मैथ्स पढ़ा है ना, तो तुम्हारे साथ इंजीनियरिंग का क्या रिश्ता है? भले इंजीनियरिंग तो मैथ्स का ऊपर ही है, पर मैथ्स पढ़ने बोलता मेरे को इंजीनियरिंग नहीं आती है। तो जो हमने देखा है जे कुछ चीज आप खुद बनाएंगे ना, यू लर्न मेनी सब्जेक्ट्स टुगेदर, जो एक्चुअली क्लास पे एक साथ कभी पढ़ाना नहीं होता है। मैंने वो बच्चों से मैं एंटेना पैटर्न मेजरमेंट सिस्टम बनाया खुद का पूरा ही। देखा उसमें एंटेना का नॉलेज लगती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो एक्सिस सिस्टम, मैं सच बताऊं कितने बड़े बड़े इंजीनियर देखा है वो 3 डायमेंशनल पे गोल हो जाते हैं। उनको एक्सिस फाइव थीटा बोलते तो फाइव थीटा बोलते हैं, मैं बोले ड्रॉ करके दिखाओ तो पूरा गोल। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे जे एंटेना को अलाइनमेंट करते हैं, वो कितने अभी तो बैठे हैं क्या, राजीव कुमार, वो तो वो भी एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, थियोडोलाइट से अलाइन करना। वो मैंने खुद किया, मेरे को पता है जो क्या दिक्कत होती है उसमें। उसके बाद जो पोजिशनर जो आप खुद बनाने जाएंगे, आप देखेंगे उसका कंट्रोल सिस्टम, वो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। और आरएफ का सब्जेक्ट जब बीएनए को यूज करते हैं, फिर आप जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उसका डेटा आउटपुट देते हैं। दिस इज कंप्यूटर साइंस आईटी। देखो इतने कंपार्टमेंट पे जो है वो एक साथ पे एक नॉलेज पे आती है। आप है ना, जो किसी को पानी पे धक्का दे दो, वो तैरना क्या सीखता है, वो बहुत कुछ सीख जाता है। हाँ, तो आई थिंक ये एजुकेशन जो है कॉलेज इंस्टीट्यूशंस पे, we should concentrate on multi-dimensional education। क्या एक सब्जेक्ट पे रख के पता नहीं होना चाहिए, एक आपको मल्टीपल में जो जरूरत पड़े वो करना पड़ेगा, दैट ये जरूरी है। और सबने बोलते इनोवेशन करता है तो कल स्टार्टअप हो जाती है, मैं बोलता हूँ वो सही नहीं है। इनोवेशन एक जगह पे और स्टार्टअप अलग जगह पे। स्टार्टअप तो धंधा एंड रोकड़ा, और इनोवेशन दिमाग ना बात से। तो ये दोनों मिल सकता है क्या? कभी कभी कुछ बहुत स्टार्टअप पे यू मे नॉट नीड एन इनोवेशन, यू नीड एन आइडिया व्हिच इज वेरी इजी एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट एंड ऑल। बट डीप टेक हम जाते हैं तो हमको इनोवेशन बहुत जरूरी है। इसपे जब स्टार्टअप करने बैठते हैं तो तब तो जैसे प्रोडक्ट का रेलिवेंस है क्या नहीं। हम 800-900 पेटेंट बना लिए, बट उसमें देखो 2-3 के प्रोडक्ट का मार्केट का रेलिवेंस है। अब कोई डिमांड भी है क्या नहीं प्रोडक्ट का। तो और है कि जो सपोज एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना तो हम दूसरे से कौन सा तरीके से अलग है, डिफरेंशिएशन है क्या नहीं प्रोडक्ट में, क्वालिटी में। और एक है कि कोई गैप है क्या मार्केट पे, तो हम उस पर हम जा सकते क्या नहीं, ये भी एनालिसिस बहुत जरूरी है। एंड और कभी कभी नई प्रोडक्ट लाए तो मार्केट पे अवेयरनेस नहीं है, तो उसको भी क्रिएट करना पड़ता है, हुआ करना पड़ता है मार्केट पे, सोशल मीडिया पे, ऐसा ये प्रोडक्ट पे ऐसा हो सकता है। जैसे अब मैं बताऊं फेयरनेस क्रीम, अभी कोई सुना था क्या? मेरे दादी ने सुना नहीं था फेयरनेस क्रीम क्या है। अभी आजकल तो पितृदा साहब बोल देते तो अलग बात हो जाता है। तो ये चीज जो है, जो फेयरनेस क्रीम, आप सोचो वही क्रीम है, ऊपर एक फोटो इधर उधर चेंज करके प्रोडक्ट बेच दिया, ये ब्रांडिंग रीब्रांडिंग करके बेच दिया। भले वो सही नहीं है, उसका नस्ल का बारे में बात होती है। और क्या कस्टमर को ना, आप दुकान सजा कर रखते हैं, अब बैठ के खुद मोबाइल देख रहे हैं तो कस्टमर कहाँ से आएगा। तो कस्टमर को अब समझा के बुलाना पड़ता है। और आखिर पे पैसा चाहिए, पैसा कैसे लाओगे? एक तो बैंक से लोन लाओ, स्टार्टअप लोन लाओ, और मार्केट से एचएनआई से समझाओ भाई तुम्हारा पैसा मेरे को दो तो मैं तुमको बड़ा करके दूंगा, बड़े हम नुकसान पे जाएंगे। और देखो जो सभी इनोवेशन जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट होती है वो नहीं है। हम तो सब एप्पल का आजकल तो सब एग्जांपल लेते हैं,
उजनिया स्टीव जॉब्स का तो बहुत एग्जाम्पल रहते हैं। आप अच्छी तरह देखेंगे करीबन 25 साल तक उनका प्रोडक्ट कंपनी का आउटपुट बहुत कम था, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और भले दे हैड द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द कंप्यूटर एप्पल प्रोडक्ट, बट उनका मार्केट चालू हुआ वो आईपॉड से, वो जो वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोडक्ट है, एंड सडनली इट कॉट दैट। एंड उसके बाद जो आईफोन निकाला, आईपैड निकाला, दे हैव गॉट एन एक्सपोनेंशियल जंप। So it is not that the best of the product will get the best of the market. Whether it's a society relevance, how the civilization is evolving, that is important. और एक देखिए जो टाटा नैनो, मोदी साहब ने तो कलकत्ता से पकड़ के लाए नैनो को इधर, पर नैनो को बंद करना पड़ा, बट अभी दूसरा बहुत सारे चीज बनना। It's not that the nano was actually very well designed. मैंने खुद ड्राइव किया हो, it's a very ergonomically designed vehicle. And probably it is that only vehicle जहां सरदार जी ड्राइव कर सकते, उनका पगड़ी लेके, इतना हाइट है अंदर। Don't take anything wrongly, but it is a really very height. And but then वो मार्केट पे सस्टेन नहीं किया, because a प्रोडक्ट जो टाइम पे आया, people have graduated from being a owner of bike to owner of car. तो उनको अच्छी कार चाहिए, और वो टाइम पे इट कुड नॉट बी ब्रांडेड एज ए गुड कार। कभी कभी सस्ता पे दो तो वो भी होता है, ये माल खराब तो होगा इसलिए सस्ता में दे रहा है। तो इट्स अ प्राइसिंग एंड द ब्रांडिंग वाज द इशू ओवर देयर। और हमारा इधर जैसे एप्लीकेशन पे ना, नीलेश भी जानते हैं, जो अच्छे अच्छे छोकरे हैं ना, वो लोग अच्छे अच्छे एप्लीकेशन करेंगे। जैसे गेहूं का एप्लीकेशन बहुत मार्केट पे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में साल पे 20 बार जाना पड़ेगा, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा सेक्रेटरी से मिलने का, ऐसा मिनिस्टर से मिलने का, हम मिलके बहुत खुश हो जाते हैं। बट हमारा इधर एक छोकरा था सुजय, उसको थोड़ा बनता नहीं था बॉसों का साथ, तो उसको काम दिया, ये गाय जो खाता है उसका चारा ढूंढने का, रिमोट सेंसिंग से। और अभी चारा ढूंढने के चक्कर पे किसी को कितनों का जेल भी हो गया। बट ये आदमी बना, एंड आई टुक इट टू अमूल, एंड अमूल जैसे सोधी साहब ने was very interested, he took this technology from us to finding out the fodder cultivable areas, and so that there he can expand his cooperative movement and selectively. And you will be surprised, in the COVID year, the only company made the largest profit is the Amul, and they have and their market capitalization grew, and they expanded to all over India. और ऐसा भी तो जो वो तो इलेक्शन का इशू भी बन गया कर्नाटक में, नंदिनी को, नंदिनी ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं यूज किया, बट अमूल ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज किया, एंड दे हैव कैप्चर्ड द कर्नाटक मार्केट। और उसी से वो तो इलेक्शन कैंपेन में वो भी इशू बन गया, नंदिनी की जगह अमूल किस लिए घुस रहा है मार्केट में। और कुछ कड़वा सच है, जो statistically 5% of startups actually survive beyond 5 years, because early death is very severe there. And the successful startups are those which have a one quality, those who survive the pain most, and they last longer and make more profit and make a change in lifestyle, and sometimes change direction of human civilization. आप देखेंगे जितने उधर जैक मा और स्टीव्स और जितने बड़े बड़े हम एग्जांपल, एलन मास्क, and you see that they have actually survived to number of failures and non acceptance to bring a product which has actually lasted. So you have to be ready for it. Those who are going for a startup, you have to be ready for this. इनफैक्ट मैं मेरा ही बात बताऊं, मैं रिटायरमेंट के बाद मेरा रिटायरमेंट का जितना पैसा थोड़ी मोटी मिला था वो दिया स्टार्टअप पे। मेरे बीवी रात को उठा के बोलती थी, ये पैसा पानी पे गया तो तुम खाओगे क्या?
हम बोले वो तो भगवान है और टोपी तो है, सामने लेके बैठ जाएंगे रास्ता पे, बट वो नौबत नहीं आई। और जितने भी स्टार्टअप है आप देखेंगे ये फाउंडर सेंट्रिक है। ये इनिशियली it is the founder who attracts investors, which attracts customer, and you like it or not, if the founder is not of a proper personality, उसका सक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहती है। and you see that most of the founders are very know how to smooth talk to convincing others. I am not smooth talking. कभी कभी हमने पूछते, देखिए हम इतना टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस किए, न्यूक्लियर बम बनाए, सब बनाए, बट आप कभी देखे क्या जितने हमारा 5G ग्राउंड इक्विपमेंट है वो चाइना से लाया गया है, और जो इक्विपमेंट वो एक्चुअली चाइना पर रिजेक्ट हुई है 5 साल। मैं तो 2014 पे बीजिंग पे था, बीजिंग पे आई हैव सीन इनॉग्रेशन ऑफ 6G हार्डवेयर बाय हुए, एंड टुडे वी आर गेटिंग 5G। अभी आपको 4G का परफॉर्मेंस मिल रहा है, बैंडविड्थ मिल रहा है क्या नहीं, कंसिस्टेंसी आ रहा है क्या नहीं, बट हमने रेडी मार्केट रियलाइजेशन के लिए लाए। अब जो इतना कैट स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, कोई भी इज नॉट मेड बाय इंडियंस। अब हम लोग खुद को कितना बोलते हैं ना, हमने सॉफ्टवेयर जनरेट भी ट्रू। आप सोचो कितने ब्रांडेड सॉफ्टवेयर वो कोई इंडियन कंपनी का बना क्या। अब semiconductor fab, I am nothing against the semiconductor fab. We are bringing a great semiconductor fab and all. but कल वो 14 नैनोमीटर का जो ला रहे हैं उसको 6 नैनोमीटर करने का है। Can we do it? Because अब देखिए जो पेट्रोलियम इतने रिफाइनरी है, इसका सभी कैटलिस्ट है ना, क्रैकिंग कैटलिस्ट जो है वो सब फ्रांस से आता है, इसका हर एक इक्विपमेंट आता है। आप जाके देखेंगे जो फैब फैसिलिटी का हर एक इक्विपमेंट बेल्जियम से आता है, जितने लेजर ऑप्टिकल कंट्रोल सिस्टम। तो ये चीज देखेंगे आप, प्रोग्रेस कुछ तक कर सकते हैं, बट उसका बियॉन्ड करने का है तो आपको साधन भी बनाना पड़ेगा। जब द मशीन, द रोबोट, द इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर द डीप टेक कम्स। इस पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे एक फैसिलिटी लाए, ये रिफाइनरी चल रहा है, कल दूसरे ने बेहतर कैटलिस्ट बनाया, he will make more profit, तो तब तुम्हारा कंपनी पीछे चला जाएगा, which was looking to be great angel, and suddenly it will go up, and the future, nobody can predict, you can only build it. मैं एक छोटी सी देता हूँ, मैं इजराइल बहुत बार गया, पूरा इजराइल का पॉपुलेशन अहमदाबाद से 50% ज्यादा है, पूरा 50% से ज्यादा है। जस्ट अहमदाबाद का कुछ है 80 लाख, उनका 1.2 करोड़ जैसे है पॉपुलेशन, और एक बार कार राइड करो तो आगे पीछे पूरा इजराइल घूम के आ सकता है 8 घंटे का अंदर। तो but you surprisingly they're selling us 13% of their equipments, of the defense equipments, and that's something terrible. We are a 1.2 crores people can sell you so much product, from aircraft radar to tracking radars to man portable radars to missiles to bombs to even the domes, iron dome and everything, and that's from a population of 1.2 crores people. In fact, I went to a big company, Qubit, we were making actually atomic clocks. मेरे को ताज्जुब हुआ, वो 3 बेडरूम का कंपनी है, देयर आर ओनली क्लीन रूम
वाज जो ग्लोब बॉक्स रहते हैं ना, वो है क्लीन, वो बस उतना ही है। और 2 टॉयलेट है, एक एग्जीक्यूटिव टॉयलेट जो बाहर का गेस्ट आता है तो उनके लिए थोड़ा साफ सुथरा है, बाकी नॉर्मल। और वो लोग बनाते, मैंने देखा ऑलमोस्ट 100 एटॉमिक क्लॉक्स एक साथ टेस्ट होते हैं। और हमने रूबिडियम क्लॉक खरीदा एक एक को जो भाव पे, मैं देखा वो अंदर 86 डिग्री पे रूबिडियम वेपोराइज होता है, ग्लोब बॉक्स पे अंदर टेस्ट ट्यूब रखा है, ऐसा कैंची है 800 डिग्री पे गर्म किया है, कट 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 करके रूबिडियम क्लॉक बना रहा है। वो 1 इंच से 1 फुट तक का क्लॉक बन रहा है और वो 100 क्लॉक टेस्ट हो रहा है एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर से। एंड यू नो, हम हमारा इसरो पे हो तो हम तो इतने स्पेंड करते हैं, या भले हम कम खर्चा दुनिया के होते बट हम भी कम नहीं जाते। हम क्या, गरीबों का घोड़ा रोग ज्यादा होता है, वो घोड़ा तो हमने 10-10 डीएनए खरीद के बढ़ते हैं। मैं देख के आया, पहले ही हमारा इधर जो एटॉमिक क्लॉक का जो है ना, जो क्लास 100 था वो कैंसिल कर दिया। वो बोला क्लास 10,000 इज सफिशिएंट है, नॉर्मल एसी है। वो चक्कर पे एक छोकरा भाग गया, वो अलग बात है, बट हमको रूबिडियम क्लॉक मिला। मैं जाके ताजुब हुआ, जिसका रूबिडियम क्लॉक ये कौन सा जुपिटर मिशन पे जा रहा है, जो हर एक F-16 में जो इसका एटॉमिक क्लॉक, उसका 3 बकर का है, 3 बेडरूम है। एंड द फाउंडर इज एन 87-year-old पर्सन। तो मैं भी, इसलिए मैं भी फाउंडर बना। वो 87 ईयर बन सकता है तो मैं किस बात का कमी हूं। और जो डीप स्टेक स्टार्टअप पे प्रॉब्लम क्या है, जो जिसका ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, हमारे डायोड का कट इन वोल्टेज जैसा, एक पर्टिकुलर लेवल का बाद ही ग्रो होता है। और पर्टिकुलर लेवल के बाद जनरल डायोड ऐसे बैकफायर कर सकता है, तो आगे नहीं जा सकता है। तो इसके लिए इन्वेस्टर सब अभी हमारा इधर इन्वेस्टर क्या है, ये एक Q1 का पैसा नेक्स्ट Q1 पे वापस मिलना चाहिए, और 20% से तो ज्यादा होना चाहिए, कालूपुर कमर्शियल बैंक से तो ज्यादा इंटरेस्ट जैसे मिलना चाहिए। तो ये धंधा पे ये प्रॉब्लम चालू हो जाता है। द इन्वेस्टर का, डीप टेक पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टर का, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू टेक केयर लॉन्ग टर्म पैसा, एटलीस्ट 5 साल के लिए पैसा रखना पड़ेगा। राइट नाउ आई एम सीइंग द न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग, but if some previous, so always it is by some foreign investors. You will see some Californian investors coming and putting money in deep tech. और भले हमारा इधर बहुत का पैसा है, दुबई में जाके 100 करोड़ का बंगलो बनाएंगे, बट इधर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका कारण कुछ नहीं है, ये क्या है कि जो स्टार्टअप फाउंडर के जो वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, बना तो लिए, इनोवेशन का जरूरत है क्या नहीं, कितना करना पड़ेगा, अब कितना गेस्टेशन हो, जाके बोलता है सब 1 साल पे तो बोइंग बना के भेज देंगे। बोइंग 1 साल पे नहीं बनता है। तो और वो ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे मैं इसरो से गया, मैं पहला प्रपोजल बनाया ना, हम इसरो का प्रपोजल मुताबिक बनाया 170 करोड़, बट देखा 170 करोड़ देखे जो भी आता है ना वो दरवाजा से भाग जाता है। तो हमने देखा कि हम ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं फंडिंग। एंड जो फंडिंग एजेंसीज जो है वो क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये इसमें बहुत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, बहुत एफर्ट है। और क्या करते हैं ये जो, ये देखो ये बड़ा साइंटिस्ट है, ये जानबूझ के ज्यादा पैसा मांग रहा है, दे अंडर एस्टिमेट। इनफैक्ट इसका कारण ही है ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फंड पीपल दे आर नॉट एजुकेटेड ऑन दैट इकोनॉमिक्स पे। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री स्टिग्लिट्ज का काम है, नोबेल प्राइज इसका, जिसका बेसिस पे अभी सेकंड हैंड कार का मार्केट है। जे आप देखेंगे, जे मारुति लेके सेकंड हैंड कार जो भाव बोलता है आप खरीद लेंगे, बट आप खुद बेचने जाओ, ये गाड़ी तो धक्का दे के आया होगा, पोरबंदर पे तो गिराया होगा, इधर तो इसका टायर देखो कब का पुराना है,
But sometimes I know one of my colleagues was sold his old Premier Padmini car to a customer. लेकिन देखो इसका टायर भी ओरिजिनल है 71 मॉडल का. तो people buy that also ideas. तो इसका जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग एसिमेट्री है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है. अभी प्रेजेंटली आई एम सीइंग देयर आर थर्ड पार्टी एसेसर्स आर कमिंग हु कैन ब्रीज, यू नो, हु कैन सर्टिफाई. जैसे आपका बेटे के आप सब आईएम पे रिक्रूट करने किस लिए जाते हैं? You can only recruit a person, you can assess a person up to your IQ level. If somebody beyond your IQ level, तो उसको लगेगा either fraud or a पागल or a genius. So you cannot assess a person beyond IQ level. So जो recruiter जाते हैं, थोड़ी हो जाते हैं IIM का छोकरे जो इतने एग्जाम देखे वो जाते हैं. IIM is the third party certifier. ये छोकरा को they are not recruiting him on the basis of what marks and grades he got. That they have done a proper selection process. So they are the third party assessor. That is the Stiglitz principle. And that is why हम बेटे को IIT भेजने को, भले 6th grade मिले, उसको नौकरी तो मिल जाएगा. तो अभी जैसे हर एक का एक एक स्टोरी है, लाइफ स्टोरी. जैसे नीलेश का लाइफ स्टोरी अलग है, मेरा अलग है. नीलेश 2 बजे घर जाता है, मैं 7 बजे जाकर सो जाता हूँ. तो ये सब है. I'm sorry if there's nothing to it. He's a very hardworking person and all of those things. And I'm a quite lazy person. तो ऐसे हर एक स्टार्टअप का भी अलग अलग स्टोरी है. ये भले उसका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बट हर एक स्टोरी का अलग अलग है. जैसे हर एक आदमी का स्टोरीज अलग है. अब एनजे भट्ट का स्टोरी बोलो, कोई भी हिमालय का कहीं का चूड़ा बता देगा. ये कैंपस पे क्या हो रहा है पता नहीं है. तो ऐसे है. तो बट हमने क्या पिछले less than 2 years we are in the business when it started after it, and we have already started making waves. But और सबसे अच्छा कि जो हमने सोचे जो डीप टेक पे जाते हैं, तो देखो हमें जितना काबिलियत है हम उतना ही कर सकते हैं. अभी नई सब्जेक्ट तो बुढ़ापा पे सीख नहीं सकते. जो हमें सीखा हुआ, जिस पे काम किया, मैं चलो वही धंधा पे लगते हैं. तो ये सिंथेटिक अपर्चर इसे टॉप सिग्नल प्रोसेसिंग का काम है. तो मैंने सोचा चलो इसी में मेरा थोड़ा कामयाबी है तो करे. बट जाके देखा जो मार्केट पे देयर इज ए बिग डिफरेंस. इस एवरीबॉडी हैज गॉन टू एक्सबैंड. उसमें क्या हार्डवेयर छोटा होता है, जितना आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे हार्डवेयर. बट काम का चीज है, ये इंडिया पे काम का नहीं है. इट कैन नॉट सी थ्रू द फॉरेस्ट एंड ऑल. इंडिया पे जो काम का है वो एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी, जिसमें कोई मार्केट पे कोई नहीं है, which can see through the vegetation and all. तो हमने सोचे चलो हम एल बैंड पे हार्डवेयर बनाते हैं. बट तब देखे जे जितने सब जिसका पास जाए बोलता है जे हाई रेजोल्यूशन चाहिए. अभी मैं फिजिक्स में कैसे समझाऊं भाई, तुम्हारा 3 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन है तो तुम 30 सेंटीमीटर आसानी बन सकता है. बट तुम्हारा 3 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, बट हमारा लो फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो आपको तो 70 सेंटीमीटर वेवलेंथ, 26 सेंटीमीटर वेवलेंथ, तो हमसे 2.5 मीटर ही बन सकता है. बट पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. तो हमने सोचा विल गिव एन एक्स बैंड रेजोल्यूशन एंड एल बैंड. टेक्नोलॉजी विल चेंज करे and we'll do the disruptive pricing. That will be, and we'll have a more coverage per satellite market पे जो है, X band पे जो है. तो then we have to change the technology. But then इसको करने के लिए see जैसे you see the many companies पहले सैटेलाइट बना लेंगे, भले सैटेलाइट देखे नहीं जिंदगी में सैटेलाइट ही देखे नहीं है, वो पहले सैटेलाइट के साथ लॉन्च कर देंगे. बाद में थोड़ा थोड़ा चाबी दो तो बोलेगा जे हम इटाली से खरीद के ला रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ऊपर लेबल बदल दे रहे हैं, मेड इन इटाली से मेड इन इंडिया ऐसे करके.
But we thought that let us prove it by low altitude flying. But अभी इसरो पर रहता तो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते, एक एक फ्लाइट पे 15-20 लाख खर्चा कर देते. अभी हमारी पास 15 लाख क्या है, कશું નથી. तो हमने बोले चलो ड्रोन करते, सब बोले सस्ता है, तो हम ड्रोन में करने गए. देखिए इसमें डिस्टर्बेंस इतना है, तो सार बनाने पूरा टेक्नोलॉजी पूरा बदल जा रहा है, सार प्रोसेसिंग का. और बाद में देखा ड्रोन भी इतना भाव में बोल रहे हैं, तो मैं बोला चलो गरीब आदमी है तो ड्रोन ही बना लेते. तो हम ड्रोन ही बनाना चालू कर दिए. और हमने जो टेक्नोलॉजी ली, जो अभी का जो इमेजिंग है, ये पैची एक स्पॉट लिया, फिर कुछ 500 किलोमीटर जाके और एक स्पॉट 5 बाय 5 किलोमीटर लिया. ये पैची इमेजिंग ऊपर अच्छा लगता है, 1 मीटर रेजोल्यूशन, 30 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन. बट बोलो तुम 100 मीटर का 100 किलोमीटर का इमेजिंग होगा, बोलता नहीं 5 होगा, फिर 500 किलोमीटर जाके और एक होगा. दैट मीन्स ये गांव पे रसगुल्ला खाओ, फिर कलकत्ता में रसगुल्ला खाओ, नॉर्थ बंगाल पे जाके जलेबी खाओ, ऐसी हालत है. तो हमने सोचा लेट अस चेंज द टेक्नोलॉजी. Will technology which will have a continuous imaging in a high, obviously it has an implications and all. तो हमने क्या देखा, जे एक नई टेक्नोलॉजी हमने दिया बेस्ड ऑन माय पेटेंट, जो actually it needs a unfallible antenna which will have a both L and P, and we have also changed the technology because हम सैक पे क्या थोड़ा पैसे वाले है, सब है, नीले साहब के पास पैसा बहुत है. तो अभी क्या है, छोटे छोटे सब अब इतने डिपार्टमेंट बन गए, इतने लैबोरेटरी, डीके सिंह का एलएनए का बन गया, ये सबको, किसको मिक्सर बन गया, किसको वो कर गया. तो सबको अकोमोडेट करने का, तो सबसे हार्डवेयर लो तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, बिकॉज जितना डिपार्टमेंट उतना हार्डवेयर होगा. हमने सोचा भाई हमारा तो इतना तो नहीं है, तो हम बोले 3/4 कट कर देते हैं. तो हम बोल गए थे सॉफ्टवेयर डिफरेंट रेडर ला रहे हैं, तो आरएफ घट गया. एंड द होल हार्डवेयर हैज बिकम सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड. No, it's a programming. I can change the bandwidth, I can change the center frequency, I can change the sampling frequency, I can change the polarization just by a flip of a button. इसको कुछ I remember that the RI set time we had so much difficulty. Changing even a one parameter used to take 3 months. Everywhere the coding has to be changed. Here, सुबह लगा आज करने का तो शाम को शादी, ऐसे ही हमारा है. तो हार्डवेयर पूरा बदल देते, पूरा मतलब पर्सनालिटी बदल जाता है. एंड आप दिस यू कैन सी दिस स्लाइड्स है. तो you can see that we can have a totally remote control drone where today we can do it, and ठीक है, बहुत है. So this video is meant for the type of adverse conditions you have to fly, land, take off. कभी कभी ये सब जगह पे जाते हैं तो ख्याल रखना पड़ता है साफ है क्या नहीं, even to test it. And we have some set of, I don't know how it is, a very steep angle polarimetric radars, but you can see very precisely it sits with the data. And we have also invented a new type of SAR processing. It is a angular scanning. That you don't have to take a very long data. You can have a limited data and scan it angularly to get a wider coverage. And the processing is a very difficult thing, because at the site processing you have a computing performances. But what we used, using the 5G and the cloud, and they process it and deliver within 15 minutes at your customer site. And you will not know where you are flying and where you are getting the data. It is totally transparent through this. And it's
and today I'm not announcing, but we are going to get a big award for this from one cloud company for first time demonstrating cloud with a remote operation. And we want to take it much further. That that's our satellite, we want to get it off the ground station. क्या आप ग्राउंड स्टेशन में बड़ी बड़ी एंटेना लगाते हैं, कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं, and there's a huge expenditure, and ground station are a running expenditure, and you have to get a land, you have to get a different place, manpower, and all these things. So what we want to do, they say today's date, OneWeb and Starlinks, they fly from 850 kilometers to 1200 kilometers. And we want to use this new technology of 5G, 6G, so that everything is our satellite is an IoT. Satellite data transmission control is just treat this satellite is another IoT device and control it. And we hope that when we launch our satellite, we'll be getting rid of the ground station completely. And it can be, we can imagine USA and get the data instantly through Starlink or OneWeb in India. It will be processed there and maybe transmitted back to somewhere else for some other commanding post. And not only that, we have also, हमने सोचा जो सार तो बोलते व्हीकल में प्लेन चाहता है, ड्रोन चाहता है, हम लोग गाड़ी पे चढ़ा के देखे कैसे लगता है. And you can see the type of disturbance. We have driven around this, and we are now proposing image दिखाएंगे. And you see that the traffic junction, traffic police वाला भी पकड़ के बोलता है क्या है, क्या लेके जा रहे हो. And you have to stop the vehicle, then you drive, then another place you stop, then a bullock comes halfway through, and whether you can still do the synthetic aperture radar processing. And we could get it done, and they just observe actually through the dense trees, walls, we could image up to 1.5 kilometer. It's a foliage penetration radar, and you don't have to make a big radar. It's a radar of 5 kg, and you can carry it on your cycle or carry on your shoulder, walk around. आपको पसंद है तो continuous imaging ले, आपको कोई region specific हो तो थोड़ा पैदल चल के पूरा scan कर ले, and you get an imaging, and which we believe that for many of these operations in the forested areas, this will be a big boon. In fact, we hope we'll get a proper response from the government. And we have also built, because क्या कौन सा market पे कैसा click करेगा पता नहीं है, तो we have to build multiple products. जैसे दुकान पे सजा कर रखते हैं ना, रसगुल्ला, चटनी, समोसा, तो ऐसे we have also built ground पे. But each case we have gone for an avant-garde. That is that's the most important thing is that what we realize that for mining and all, the present day GPS are very unsuitable. अच्छा लगता है चक्का का साथ सैक कैंपस पे, आप माइन एरिया पे जाएंगे, कोलियरी पे जाएंगे और जिंक माइनिंग पे जाएंगे, जहाँ 700 मीटर नीचे जो very high less oxygen content पे ऑपरेट करना होता है, you will find it is not easy job. So we have now proposing, this is for mine detector and all, a drone borne GPR. It will actually give you a few centimeters resolution from a height of 3 to 4 meters flying over this, and you can see many of this data how they are presented and all. But I will, this is the top left one. This is a new GPR which will be scanned by drone on a rectangular grid and then do a synthetic aperture radar. The basic limitation of GPR is that a resolution, because the beam width to go in one direction, resolution becomes poorer, and here it will be a two-dimensional synthetic aperture radar, and you will get a few centimeters resolution. And we have actually a manual pipe, we have imaged it through this GPR as an experimental,
and you can see at a different depth how the pipe is looking like that. And obviously we are also, because there are a lot of customer interest, so we went for, they say, whether we can find out mosquito larva through imaging. तो सबने बोला ये गधा काम है कौन लेने का, but we have taken it and we have done experiment, and we have actually from a 15-meter height, 15 to 20-meter height, we have imaged, and a small cup, wooden earthen cup, and in that we have put mosquito larva and clean water, and it is a double blind measurement, and whether we could detect it. Yes, we could detect it, larva specifically, through our algorithm. And presently we are approached by a state government to do a bigger survey over there, but albeit that probably the best classifier today hyperspectral. The problem क्या है hyperspectral, a 3D cube है, वो डेटा देखते देखते सामने वाला थक जाता है, वो बोलता है देखने का नहीं मेरे को. ये जैसे ना एग्जाम का आप एक पेज का रिप्लाई मांग रहा है, आपको 200 पेज का रिप्लाई लेके दे दिया, पढ़ो, वो एग्जाम छोड़ के वो तो टीचर भाग जाएगा. तो ऐसे ही है. So we have done a classifier. You can see that's a type of crop classification we could do so precisely and so demarcate there, which a normal optical imaging cannot do. And you don't need a 3D cube. Or we make our own instruments. The far field we have made it, and we have made our near field. Every instrument, scanner to software to, and it is also remote operation. You really don't have to go inside and operate. It's remote operation, and we make all the GPRs ourselves. Hexacopter से, quadrocopter से, octocopter, every GPR we make ourselves. अभी बोलते हैं जे सब बनाने का जरूरत है क्या नहीं, because again funding. So that it actually triggers innovation, and once you start building, you'll find that the building becomes easy. And in fact, that this is the GPR, the top right, is the GPR world price, and you will be find that this GPR is totally controlled remotely. In fact, you can control up to 5-kilometer distance, and you get the complete data in your computer tab, and you analyze it and demonstrate. You don't have to go because GPR goes. You don't have to wait for the processing. Because if it is a mine detection and all, you should be able to know beforehand. You cannot wait till you walk over the mine. You have to get it beforehand. And we have got an IDX championship. We have got a very big challenge, and probably if God permits, because nowadays in business पे भगवान पे काफी भरोसा करना पड़ता है, तो we may get probably a 24 satellite contract to build it. And we have also been, Defense Minister has specifically felicitated us, not only for that, but also we have the only woman entrepreneur in defense startups. For that also we are felicitated. And you can see the team, and that my selection process is from the grasping power of the person. Nothing, I don't look at degree, marks or anything. And what we look at, we give them a problem. You study in internet, come back and give a lecture to me for 10 minutes. It may be how mitochondria and chlorophyll, which is a parasite germ in a cell, could change 2 different life forms. Or, how do you, if you can analyze the genes, how can you predict your age? और तुम्हारा MRI का principle क्या है, कैसे करता है? And you have to go and read it and brief to me, and you'll be surprised we have a mix of
people, and we got not only engineers, but our 60% employees are from general streams, that physics, maths, statistics, even architecture, and even one is from media. And they have become radar engineers. One of our topmost navigation engineer is actually physics MSc. So those who think that the only engineers can make startups and do great engineering, that is wrong. This much I could say. And right or wrong, I don't know, but we have a 60% employees are women, because they pass through this rigorous test. So that is one thing over there. And thank you for your kind attention. It is a short story, told long. Open question answer. Thank you so much, sir, for such an influential message. Now we will have a group photo session. So I request all dignitaries to please come on the stage for this group photo. And we have 4 groups of each of students A, B, C, and D. We will have each one group one by one. Before the team A gets ready, I would request Director SAC, Nilesh Desai sir, to please come on the stage and present a memento on behalf of us. Thank you so much, sir. Your presence has truly added an immense value to the event. Thank you, sir. And now Group A, students and faculty members. I would request Controller SAC, respected speakers, Associate Director DK Singh sir, to please come on the stage. I request all SMC members to please join us on the dais. All SMC members, please.
Now all students whose photography is over can proceed for the tea break in the basement, and we will assemble it here after 15 minutes. Now next batch B. B group students can come forward. Hmm? Now all A batch group can go for tea in the basement, and B batch students can come forward. Mhm. Now batch C. Please proceed fast for tea. D group students also, please be ready for the photograph. Hmm? Hmm. Now D group, please come forward. After that, we will have a group photo session with committee members. All committee members, please be ready for this group photograph. Now I request all the committee members, please come forward.
The online viewers who are watching the event through YouTube platform are requested to join after 20 minutes. We have a 20 minutes tea break. Thank you. बंद कर दें साउंड साउंड बंद कर दो साउंड बंद कर दे कोई नहीं चाय के लिए फिर अभी पर आऊंगा
गवर्नमेंट कॉलेज में शामिल थे लगभग 270 स्टूडेंट्स प्रति मेंबर्स हम भाग ले रहे थे इंजीनियरिंग सेलिब्रेशन ये जो सब्जेक्ट थे स्कूल टू स्टार्टअप एग्जिटिंग यंग माइंड टू इनोवेट ये टॉपिक पर हमें लगभग 4 मेजर टॉक अरेंज કરી છે 4 अलग अलग પ્રકારના ઇનોવેટર્સ અને યુવાનો ચારે ચાર ગુજરાત નું બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવે છે એ રીતે પણ અનુભવ કહેવાય કે કોઇન્સિડન્સ અને સાથે મેં થોડું ઈસરો વિશે પણ જાણકારી આપી ખાસ કરીને સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર જે મારો મુખ્ય ઉપયોગ કેન્દ્ર છે એની માહિતી પણ વિદ્યાર્થીઓને આપી કુલ મળીને લગભગ 5 આવા જે વ્યાખ્યાનો ગોઠવ્યા છે જેથી કરીને સ્ટુડન્ટ્સ ને આગળ પ્રેરણા મળે મોટિવેશન થાય માઇન્ડ્સ જે ઇગ્નાઇટિંગ યંગ માઇન્ડ્સ જે થીમ છે ઇનોવેશન કરવા તરફ પ્રેરાય આ 4-5 સક્સેસ સ્ટોરી સાંભળીને જે આઈડિયા આવશે અને પોતાની રીતે એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં કે બીજા અન્ય ફિલ્ડમાં પણ ઇનોવેશન ધ્યાન આપીને અને પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ આગળ તરફ વધે જેથી ગવર્મેન્ટની આની ગવર્મેન્ટની પોલિસી છે જેટલું બને એટલું યંગ સ્ટુડન્ટને સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું તો એ દિશામાં એ તમારો સંયુક્ત પ્રયાસ છે અને સાથે સાથે અમે એ આ વ્યાખ્યાનો પૂરા થાય પછી ઇસરોની જે બધી અલગ અલગ ફેસિલિટીઝ છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ અંગેની પરિક્રમા અથવા તો વિઝિટ પણ ગોઠવી છે જેથી જે આ 270 સ્ટુડન્ટો આવ્યા છે એમને સ્પેસ ટેકનોલોજી રિસર્ચ વિશે પ્રેક્ટિકલ જોવાથી એમની જાણકારી વધારે જાગૃત થશે મોટિવેશન પણ મળશે અને કઈ રીતે શું કાર્ય કરી રહ્યું છે ખાસ કરીને અંતરિક્ષ ઉપયોગ કેન્દ્ર સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરમાં બધું પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે ખાસ કરીને રિસર્ચ અને ઇનોવેશન જે પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એની માહિતી એમને પોતાની મળશે એ એમને આગળ જતા એમને પોતાનું સેટઅપ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત થશે એવી મારી અપેક્ષા. થેન્ક યુ.
थोड़ा कपड़ा कौन है व्हाइट टच ऑफ है ना, टच ऑफ है ना।
मैडम बुलाइए। Will have to wait ना, अभी तो लोगों को आ जाने दो ना। नहीं, ये कह रहा अभी स्टार्ट कराइए। पर स्पीकर का है। स्पीकर सामने है? नहीं, अरिजीत अरिजीत सर का स्टार्ट कर दें, ऐसे बोल रहे हाँ, यही तो है ना पहला। हो? किसने बोला स्टार्ट करने के लिए? अमित यहाँ से बोल रहे। मेल कर रहे हैं। अच्छा, तो लेट अस वेट ना, तब लेट अस जॉइन डायरेक्टर्स के बाद में जॉइन कर दो। डायरेक्टर्स को बाद में जॉइन करेंगे। वो लोग शायद चले भी गए, कल उनका ही आ जाए पीछे तो। ईमेल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन है। ये इंस्ट्रक्शन अभी बोल देंगे, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। One formal announcement. In the second half of the day, laboratory visits are planned for you. Vehicles are already arranged for this internal commute. So students are strictly requested to use official vehicles only. Students shall be keep in touch with their focal points. We have 4 laboratories to visit. Apart from these 4 laboratories, entry is strictly prohibited to any other premises. The area is under CCTV surveillance and controlled by CISF. So please remain in your group and follow instructions from focal points. You will be definitely enjoying the laboratory visits, so please remain here. Thank you. Welcome back. As famously quoted by Mark Twain, the secret of getting ahead is getting started. So someone who made this statement true is present with us today. Shri Arjit Soni, the founder and CEO of MyBike, India's first, largest, and one of the most successful active micromobility service. A chartered accountant by education, Arjit came up with the idea of My Bike. He launched it in 2014 on World Environment Day. My Bike is a station-based bicycle sharing and renting services. As on date, MyBike is present across 7 cities with a fleet of 10,000 plus pedal bicycles across a network of 500 plus bike swapping hubs. Please welcome Shri Arjit Soni. Hi, good afternoon, everyone. So, firstly, thank you, ISRO, and thank you all the dignitaries who were there
for this opportunity. ISRO is a brand, right? So it's certainly very special for me to have this opportunity to come here and share my story with all of you. And hopefully you will find some good insights from my own journey of being an entrepreneur, which might help you in your journey. So often, I get asked at my bike, "Ke idea kahan se aaya?" And while I've repeated this on numerous occasions, I think for the sake of being repetitive, I will repeat here today as well. I was interning with PwC in Bombay, and every day Bombay में एक struggle था. बॉम्बे में मैक्सिमम लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने का स्ट्रगल बताते हैं, राइट? बट ऑनेस्टली इफ यू सी, लोकल ट्रेन का ट्रैवल का स्ट्रगल इतना नहीं था जितना लोकल ट्रेन स्टेशन पहुंचने का था और उतरने के बाद अपने डेस्टिनेशन जाने का था. तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरे हॉस्टल से अंधेरी स्टेशन मुझे रिक्शा नहीं मिलती थी, एंड सिमिलरली दादर स्टेशन से ऑफिस जाने के लिए कैब नहीं मिलती थी. कई बार तो भीख मांगना पड़ता था, भाई 20 रुपए और ले लेना लेकिन तू ले जा मुझे. कई बार बीइंग एन ऑडिटर, बॉक्स फाइल्स होती थी हमारे पास, लैपटॉप होता था. So it got really frustrating, and I thought to myself कि यार मेरे पास पैसा है लेकिन I'm still not able to get what I want. And that's where I thought कि यार मैं रोज टैक्सी ड्राइवर की गुलामी करने से तो अच्छा है 2 साइकिल खरीद लेता हूँ. एक साइकिल से हॉस्टल से अंधेरी स्टेशन जाऊंगा, वहां पार्क कर दूंगा, और दूसरी साइकिल दादर पे पार्क रहेगी ओवरनाइट, उसको अनलॉक करके मैं मेरे ऑफिस चला जाऊंगा. And that's how the idea of my bike came to me. So while this idea came to me, I of course मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, which is what you do, right? कोई आइडिया आता है तो आप वैलिडेशन के लिए अपने पीयर सर्कल में बात करते हो. एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियस आंसर यही था कि इंडिया में साइकिल कौन चलाएगा. एंड मेरा काउंटर क्वेश्चन यही था कि यार चलने से तो बेटर है, एंड कन्वीनियंस सेल्स, राइट? सो व्हाई वुडंट पीपल नॉट वांट टू साइकिल? तो कोई बोलेगा नहीं यार, इंडिया में ना साइकिल गरीबों का प्रोडक्ट है, इंडिया एक एस्पिरेशनल मार्केट है, और साइकिल कोई नहीं चलाना चाहेगा. तो मैं बोलता हूँ लोगों को छोड़, अपने बारे में बता, तेरे को कोई प्रॉब्लम है साइकिल चलाने से? एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, उल्टा हेल्दी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है. सो आई रियलाइज दैट while I am trying to take feedback from people, they have a perception about the market which is different from their own thought process. कि जब खुद के लिए सोचने पे आ जाते हैं, they have no issues riding a cycle, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इंडिया एज अ मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा साइकिल एज अ प्रोडक्ट को. एंड माय रैशनल वाज कि यार मैं कन्वीनियंस दे रहा हूं, अगर मेरा प्रोडक्ट ज्यादा कन्वीनियंट है तो क्यों नहीं बिकेगा. So while I was constantly having this discussion with my friends, एक दूसरा एपिसोड हुआ, मैं सीए बन गया. I was CA at 21, and I told my father that I've achieved what you expected me to, so now I deserve a car. So मेरे फादर ने मुझे कार फोर्सफुली गिफ्ट करी. एंड बॉम्बे में मैं I used to stay at Prabha Devi, and every Sunday I would typically go to Palladium Mall. So I was like waiting for that day कि जिस दिन सीए हो जाऊंगा और मेरी गाड़ी आएगी ना, मैं शान से गाड़ी में Palladium Mall जाऊंगा. सो फाइनली गाड़ी आ गई, एंड पहला संडे आया और वो गाड़ी लेके मैं Palladium Mall गया, और वहां मुझे आधा घंटा लग गया Palladium Mall की पार्किंग में घुसने में, और आधे से ज्यादा घंटा लग गया मेरे को बाहर निकलने में. एंड दैट डे आई रियलाइज कि यार इससे तो टैक्सी बढ़िया थी. तो मैंने मेरा पूरा सीए पास कर लिया इस उम्मीद में कि मेरे फादर मुझे गाड़ी दिलाएंगे, और जिस दिन वो मौका आया तब मैंने रियलाइज किया कि गाड़ी कन्वीनियंट नहीं है. सो दिस वाज द सेकंड एक्सपीरियंस इन माय लाइफ. एक तरफ जहां मैंने लोकल ट्रेन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट किया और मुझे फर्स्ट एंड लास्ट माइल की प्रॉब्लम आई, और दूसरी तरफ मैंने कार से कम्यूट किया और मुझे पार्किंग की प्रॉब्लम आई. एंड दैट अगेन गॉट मी थिंकिंग कि यार जो मैंने आइडिया सोचा था उसको मैं डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, मतलब वो आइडिया पे मेरे को शायद एक्सप्लोर करना चाहिए. So I came back to Ahmedabad. I joined my father. I worked with him for a couple of years. But parallelly, I kept toying with this idea. इस आइडिया को क्या कहते हैं? मतलब गूगल भी करूं तो ये आइडिया को क्या क्वेरी डाल के गूगल करूं, was the struggle. So I somehow googled and I saw that ये आइडिया नया नहीं है. There have been developed countries जिन्होंने इस आइडिया को implement किया है. But जब मैंने उनका बिजनेस मॉडल समझा, एंड थैंकफुली बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं वो मॉडल को एक्सेल में डाल के विजुअलाइज कर पाया. मुझे लगा कि जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं, देयर इज अ फ्लॉ इन द रेवेन्यू मॉडल, और ये स्केल अप नहीं कर पाएंगे इस तरह से अप्रोच करेंगे तो. सो आई केप्ट टॉयिंग विद दिस आइडिया, एंड I reached out to one of the persons I knew, मेरे नेबर थे. I said सर मुझे एक बार ये आइडिया को पिच करना है गवर्नमेंट को. आई थिंक द गवर्नमेंट शुड सिंसियरली लुक एट दिस आइडिया.
सो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर से तुम्हारी मीटिंग कराता हूँ। एंड ही टुक मी टू द कमिश्नर्स ऑफिस एंड कमिश्नर ने मुझे 24 साल का नौजवान समझ के नजरअंदाज कर दिया, मतलब नॉट इन अ रॉन्ग वे। और बोला कि अगर कल टेररिस्ट अटैक हुआ, साइकिल पे कोई बॉम्ब रख गया तो क्या होगा। So I somehow, didn't get a satisfactory answer. So I told my uncle that, no, uncle, I want to meet Narendra Bhai, you know. And I was lucky because this is 2013 and he was the chief minister. So there was still a possibility to meet him. And so he probably saw the conviction in my eye and the belief that I had in my idea, that he took me along. He had an appointment with Narendra Bhai and he took me along. Now here I am, a 23-year-old, 24-year-old, in front of Narendra Bhai, and 2013 mein Narendra Bhai was the cult, right? He started on his journey of becoming the prime minister. So I enter into the chief minister's office. He is not expecting me because appointment was of my uncle. He just took me along, and I was told कि 2 minute मिलेंगे present करने को. I prepared for 1.5, और मैंने 1.5 minute में अपना presentation रखा. To my utter surprise, he was the first person I met जिसने मुझे interrupt नहीं किया 1.5 minute में. He patiently folded his hands and listened to me. And I think ये एक rare quality है leaders की, because जैसे जैसे हम, आई थिंक ये मेरे साथ भी होगा कि जैसे जैसे हम बिजनेस में घुसते जाते हैं और बिजी होते जाते हैं, हमारी एबिलिटी टू लिसन खत्म होती जाती है. सो आई गेस दिस इज अ रेयर क्वालिटी ऑफ अ लीडर, दैट he didn't discount me that I'm a 24-year-old and let me finish what I had come and wanted to present to him. So I presented the idea and immediately he picked up the phone and called someone. अब इतना street smartness आ गया था कि if he has picked the phone and called someone, मतलब उनका interest जग चुका है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो उनको अपील कर रही है. So I figured out that he would have called some secretary or something, and that's when I got comfortable that now I think I can talk freely with him. So he figured out the idea and he said, Arjit, the idea is good and only trial and error will tell us if this will work or not. So what do you want from me? And I said, sir, मुझे pilot करने की मंजूरी चाहिए और कुछ ये 2-3 चीजें और support में चाहिए. And immediately next day मुझे corporation से call आया कि आपका proposal दीजिए, and that's how I got started. So this was my journey till 2014, where I had this idea. Of course, when I came back home, my father was elated that I got to meet Narendra Bhai, and he asked कैसा रहा क्या रहा, and I narrated. And then he said, तो तूने अब क्या डिसाइड किया है, तेरे को ये करना है क्या नहीं करना है. तो मैं बोला, पापा आपकी प्रैक्टिस भी संभालूंगा और साथ साथ इसको पैरेलली करूंगा. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू थैंक माय फादर. बहुत रेयर होता है कि ऐसे सपोर्टिव फादर्स मिलते हैं. ही डिडंट बिलीव इन द आइडिया, ही टिल डेट डज नॉट बिलीव इन द आइडिया दैट इंडिया में माई बाइक वर्क करेगा. बट ही सेड कि अगर तूने डिसाइड कर लिया कि तुझे ये करना है तो इसमें 100% कूद जा, दो नाव में सवार नहीं होना है. एंड आई एम थैंकफुल टू हिम बिकॉज अगर मैंने 100% प्लंज नहीं लिया होता, अगर आई वॉज नॉट ऑल इन, तो शायद आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा नहीं होता. सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक माई फादर फॉर दिस एडवाइस. So then 2014, and here I've secured government permission. Now I need an investor. So again, I'm just sharing my thought process as a 24-year-old. मैं बहुत क्लियर था कि हर एक को स्टार्टअप करने में ना अपनी एक रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना बहुत जरूरी है. You know that what is the risk that you're willing to take. In my case, I was very clear that because I have a financial cushion because of my father, all I will risk is my opportunity cost. मैं मेरी जिंदगी दाव पे लगा दूंगा लेकिन मैं मेरी फैमिली की सेविंग्स दाव पे नहीं लगाऊंगा. सो आई वाज वेरी क्लियर कि अगर मेरे आइडिया में दम है तो आई शुड गो आउट देयर, पिच टू अ फ्यू HNIs एंड सी के कौन इस आइडिया के साथ जुड़ना चाहता है. बिकॉज मैं तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने आइडिया सोचा है तो मैं तो प्रेजुडाइज्ड होऊंगा कि मेरा आइडिया बहुत बढ़िया है. बट अगर मैं मार्केट में 2 लोगों से मिलूंगा तो मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा और उससे मुझे अपने आइडिया में गैप्स और लूपहोल्स पता पड़ेंगे. So that's how I approached a few people in my father's network, and I was very lucky that on the very first day I met 3 investors, and the first one I knew he wouldn't invest, but I met him first because उनका critique क्या आता है वो मुझे मिल जाए तो मैं जिस investor से expect कर रहा हूँ पैसा मिलेगा उस वक्त मैं prepared रहूँ. So the first investor said no, the second investor said no, and the third investor I met and he said I'm all in. मेरा तब thought process था कि मैं 15-15 लाख के 10 investors लाऊंगा और 1.5 करोड़ का मुझे initial capital raise करना था. बट टर्न्स आउट जिस इन्वेस्टर को मैं मिला उसने बोला पूरा 1.5 करोड़. साइकिल इज अ क्रिटिकल फीचर टू माय आइडिया. सो मैंने लुधियाना का टिकट कटाया एंड मैं लुधियाना चला गया. 2 दिन का ट्रिप बनाया मैंने विदाउट एनी अपॉइंटमेंट्स.
मैं जैसे ही स्टेशन से बाहर आया, मेरे को जो फर्स्ट होटल दिखी, मैं वहां गया, फ्रेशन अप हुआ और मैंने होटल वाले को बोला यार एक कैब अरेंज कर सकते हो क्या? कैब ड्राइवर से बोला कि मेरे को फोकल पॉइंट में ले जाओ, वहां पे मैंने कुछ कंपनीज हैं, और वो कुछ कंपनीज में मैं ऐसे ही चला गया। मैं जानबूझकर बड़ी कंपनीज में नहीं गया, मैं हीरो में नहीं गया, एवन में नहीं गया, मैं पहले छोटी कंपनीज में गया ताकि उनसे बातचीत करने में मुझे पता पड़ जाए कि टर्म्स क्या होते हैं, साइकिल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। तो फर्स्ट डे वाज ऑल अबाउट meeting small companies and knowing and getting to learn from them, right? And once that was there, the next day I went to A1 Cycles first. Luckily, as they say, these are all Lala companies, and the beauty about Lala companies is क्या promoter को directly accessible, promoters directly accessible होता है, आप direct उनको मिल सकते हो। So the first day I went and I met A1, उन्होंने सुना but कोई reaction नहीं दिया, and then I went to Hero Cycles. To my utter surprise, हीरो साइकिल्स में गया और मुझे डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ मिलवा दिया। एंड 5 मिनट्स इनटू द कन्वर्सेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोला रुक जाओ, मुझे एमडी साहब को बुलाने दो। एमडी साहब आ गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ गए, कॉन्फ्रेंस रूम में चाय आ रहे हैं, बिस्किट आ रहे हैं और बात हो रही है, बताओ आइडिया क्या है। एंड आई नरेटेड माई आइडिया एंड ही सेड यार अर्जित, बहुत लोग आके आइडिया सुना के गए हैं, तुम बस एग्जीक्यूट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको साइकिल कॉस्ट पे दे देंगे, 6 महीने की वारंटी दे देंगे, और बोलो और क्या चाहिए। So that's how I garnered support from my vendor also, and this is how जो 3 की idea को start करने के लिए वो मैंने secure किया। So now I come back to Ahmedabad and 3 pillars हो गए। Now the time is to build a team. Team कैसे build करेंगे? Because day 1 पे मेरे को 20 जन की टीम चाहिए थी, 4 स्टेशंस थे, 2 शिफ्ट्स में काम करेंगे तो करीबन 16 एम्प्लॉइज तो स्टेशंस पे लग जाएंगे, प्लस एक मैनेजर एंड ऑल। So I was sitting at Cafe Coffee Day having a coffee, and Nitesh, who's here, Nitesh, yeah. So Nitesh is the first team member of my bike, and he was there at the counter serving me coffee. And he was like, "Hi, how are you? How can I help you, sir?" I was very impressed by Nitesh. So I said, "Ke, so not Nitesh." So then the waiter who served me, I said, "यार मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 20 लोग चाहिए, अपना टिश्यू पेपर पे नंबर दे दे मुझे।" तो उसने नंबर दे दिया। नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल किया तो वो घबरा गया बात करने में, तो उसने बोला सर 1 मिनट आप मेरे मैनेजर से बात करो। सो आई टॉक टू अ गाय कॉल्ड रोहित, एंड टू माय सरप्राइज रोहित वाज स्पीकिंग इन फ्लुएंट इंग्लिश। सो आई वाज लाइक रोहित, आई वांट टू मीट यू। तो रोहित नेक्स्ट डे मिलने आया, फटी हुई शर्ट, और टर्न्स आउट के रोहित नेपाल में एक टूरिस्ट गाइड था, एंड दैट्स हाउ ही लर्नड इंग्लिश। लेकिन वो ये वेटर, मतलब ये जो वेटर्स थे उस वक्त उनके साथ ही रहता था। And so I got in Rohit, a guy who was low cost, जिसको इंग्लिश भी आती है और जो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स के साथ डील भी कर सकता है। So Rohit was my first hire, and with Rohit came Nitesh and 2 more people who are still part of my bike today. So that's how I secured my first team. So the point I'm trying to make is that yeah, I mean startup is a long journey, right? आप क्यों इसको अप्रोच करना चाहता है? I see a lot of people who are like entrepreneurs rather than entrepreneurs, right? You just want to start up. The common statement I get to hear is कि you know मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, मुझे खुद का धंधा चालू करना है। Honestly मुझे स्टेटमेंट से बहुत दुख होता है, because you are demeaning employment, and that's not right, okay? So point is that you start up when you have an idea. You don't force yourself to start up. और unless वो kick आपको entrepreneurship का अच्छा लगता है तो आप startup कर सकते हो। तो you should have valid reasons to start up. Just because you want to start up, my fear is the startup journey is so tough and it's so challenging that you will give up and you will end up wasting those years. So it's very important that आप genuinely आपके idea में belief रखें while starting up. अगर आप सिर्फ बनने के लिए स्टार्टअप कर रहे हैं तो आई एम सॉरी बट यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। नाउ कमिंग टू टुडेस टॉपिक, इट्स अबाउट इनोवेशन। हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट? आई एम ट्राइंग टू रश अप है, ओके ग्रेट। सो नाउ कमिंग टू टुडेस टॉपिक अबाउट इनोवेशन, एंड आई शेयर यू अ फ्यू एग्जांपल्स कि हमने माई बाइक में कब कब कहाँ कहाँ कैसे इनोवेट किया। फर्स्ट वाज हमारा माई बाइक में हमको साइकिल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अलग अलग स्टैंड्स पे। सो हमने एक गाड़ी खरीदी, पहली गाड़ी, एंड टर्न्स आउट उसमें 2 एम्प्लॉइज लग रहे थे, एक ड्राइवर और एक हेल्पर। एक वो गाड़ी लोडिंग गाड़ी में ऊपर चढ़ता है, दूसरा नीचे से साइकिल पकड़ाता है। एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, 2 आदमी का खर्चा लग रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट साइकिल में 5 साइकिल्स ही आ रही हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन साइकिल्स की कैपेसिटी 5 ही हो रही है।
ऑन टॉप ऑफ दैट साइकिल्स पे स्क्रैचेस भी लग रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी घूम रही है तो साइकिल्स स्क्रैच हो रहा है। तो यार हाउ डू आई सॉल्व इट? अब मैं चाहता तो कोई डिजाइनर के पास जाता, कोई प्रोडक्ट डिजाइनर के पास जाता, बट नो वन वाज वांटिंग टू वर्क ऑन सच स्मॉल प्रोजेक्ट। तो मैंने मेरे फैब्रिकेटर को पकड़ा, मैं बोला मेरे को 2 दिन के लिए तेरा आदमी दे दे, जो पैसा चाहिए ले ले। और मैं मेरे फैब्रिकेटर के वहां बैठ गया और मैंने एक वर्टिकल स्टैंड बनाया जिसमें मैंने साइकिल डाली उतारी। पहली साइकिल अच्छे से फिट हो गई, फिर मैंने दूसरी साइकिल डाली उतारी कि भाई एक साइकिल खड़ी है तो दूसरी साइकिल इजीली कैसे निकल सकती है, कैसे डल सकती है। ऐसे करते करते मैंने 2 दिन के अंदर अपना वो स्टैंड डिजाइन कर लिया। अब वो स्टैंड की ब्यूटी ये है कि वो गाड़ी में जहां 5 साइकिल आती थी अब 9 साइकिल आती हैं, और जहां साइकिल्स में स्क्रैचेस आते थे अब स्क्रैचेस नहीं आते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां 2 आदमियों का काम होता था अब मेरा ड्राइवर सिंगल हैंडेडली साइकिल को उतारता है और निकालता है। तो आप एफिशिएंसी देख रहे हो, आपने एक आदमी का कॉस्ट कम किया और आपने कैरिंग कैपेसिटी गाड़ी की डबल कर दी। तो इनोवेशन को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, इनोवेशन आपको अंदर ही डेवलप करना पड़ता है। सो दिस वाज वन ऑफ द एपिसोड, वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। इसके अलावा अगर मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूं, सो या हीरो ने हमें 1000 साइकिल्स दे दी, और मेरे मैकेनिक जो इनको मैंने फर्स्ट हायर किया, टुडे ही इज हेड ऑफ ऑपरेशंस। सो मैं हर बार फीडबैक लेता था कि साइकिल कैसे, सर इसका ये बेटर हो सकता है, ये बेटर हो सकता है। मतलब वो पहले 2-3 साल में जो मैंने ओरिजिनल साइकिल खरीदी थी उसके ऑलमोस्ट सारे पुर्जे बदल गए थे बेटर करने के चक्कर में। सो इवेंचुअली ये रियलाइजेशन मुझे लेट आया कि जो लेगेसी कंपनीज हैं इनका जो स्ट्रक्चर है कि ये डीलर्स को साइकिल बेचते हैं, डीलर आगे कस्टमर को बेचता है, उसमें इनको प्रोडक्ट का फीडबैक ही नहीं मिलता है। और उस चक्कर में इनको खुद के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है कि इनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है या कितना खराब है। आई वॉज क्लोजर टू माई कस्टमर देन दीज लेगेसी कंपनीज। सो आई रियलाइज दैट ये प्रोडक्ट को मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। सो आई लाइक फॉर एग्जाम्पल टायर है तो कॉन्टिनेंटल का टायर सेकंड्स के मार्केट में 5 कुआ में मिलता है। सो वो टायर मैंने लाके मेरे मैकेनिक को दिया एंड द फीडबैक वाज पॉजिटिव। सो आई वेंट टू द वेंडर एंड आई आस्क्ड कि मुझे ये टायर और चाहिए। बोला नहीं सर और टायर नहीं मिलेंगे, ये सेकंड्स का माल है, ये बंडल में आता है और सेम टायर का ट्रेड पैटर्न नहीं मिलेगा। तो मैंने फिगर आउट किया ये माल कहाँ से आता है, तो उसने बोला सर चांदनी चौक में दिल्ली से आता है। आई वेंट टू दिल्ली चांदनी चौक विदाउट एन एड्रेस अगेन, एंड आई जस्ट इंक्वायर्ड इन द मार्केट के यहाँ पे कोई टायर का डीलर है क्या। टर्न्स आउट 2 डीलर्स हैं, और कॉन्टिनेंटल इंडिया में नहीं बेचता है लेकिन मेट्रो उसके टायर्स बनाता है, और जो कॉन्टिनेंटल क्वालिटी में रिजेक्ट करता है टायर्स वो इस तरह से मार्केट में डंप होता है। एंड आई फिगर्ड आउट, मेरा सोर्सिंग मैंने सिक्योर किया और मैं डायरेक्ट अब चांदनी चौक से वो टायर्स सोर्स करता हूँ, और वो टायर आज की तारीख में इंडिया में किसी के पास नहीं है क्योंकि वो अदरवाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट में बिकते हैं। सो इस तरह से मैंने ओवर द फर्स्ट 3-4 years मैं सीए कम और मैकेनिक ज्यादा बन गया, एंड आई न्यू मोर अबाउट माई साइकिल देन एनीवन इन दिस इंडस्ट्री। ये हुआ, then time came where we realized that probably the pedal bicycle is not the right product for this country and we should think at electric cycle. Now again we have had lot of competition, काफी players हैं हमारे market में जिन्होंने हमसे बहुत ज्यादा funding raise किया है, काफी लोग आके मर गए हैं, they have given up, और कुछ players हैं जो pivot कर गए हैं। So we were very clear कि इलेक्ट्रिक साइकिल भी जैसे हमने साइकिल खुद की बना ली ना सीख के, इलेक्ट्रिक साइकिल भी हम खुद बनाएंगे। एंड अंटिल नाउ मैं मेरा जो आईओटी लॉक है वो चाइना से सोर्स करता था सॉफ्टवेयर। आई रियलाइज दैट दिस इज द राइट टाइम कि मेरे को मेरा आईओटी भी इंडिजिनाइज करना है, एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी विल बिल्ड आवर ओन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, एंड वी डिड, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल व्हिच इज फुल्ली कनेक्टेड। There are no keys to that bicycle. The bicycle unlocks via the mobile app, the battery unlocks via the mobile app. So this is the second example. एंड टू माई सरप्राइज हमें लगता था कि चाइना के जैसी क्वालिटी इंडिया में नहीं बन पाएगी, और क्वालिटी बन भी गई तो कॉम्पिटिटिवनेस कॉस्ट में नहीं आ पाएगी। बट टू आर अटर सरप्राइज हमने जिस वेंडर के साथ मिलकर ये डेवलप किया आईओटी लॉक, वी आर राइट नाउ बिल्डिंग इट एट हाफ द कॉस्ट ऑफ व्हाट चाइना इज सेलिंग टू अस। सो पॉइंट इज दैट कुछ चीजें होती हैं जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो आपको इन हाउस डेवलप करनी ही पड़ती हैं, वही आपका मोट है, वही आपकी स्ट्रेंथ है, और वो इनोवेशन के थ्रू ही आ सकता है। सो दैट्स इट। अदर देन दिस आई वुड बी हैप्पी टू टेक सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स दैट यू मे हैव। थैंक यू सो मच। यस, Thank you. We can have few questions from the audience. we have time, right?
Any questions that you guys may have? Please. Please use mic. Thank you, sir. My first question is how you think your brand name like My Bike, and second question is आपको आपकी जो जर्नी है तो उसमें सॉफ्टवेयर की क्या जर्नी है ना, मुझे ये दो चीज जाननी है. So first question is a good question because जब I had to come up with a brand name, तो you can sit please. So मुझे बोला गया कि बाइक वर्ड मत यूज करो because इंडिया में बाइक मीन्स मोटर बाइक, राइट? बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, वो बाइक वर्ड जो है ना, वो साइकिल के साथ वो एक सोशल स्टिग्मा का डर है, तो बाइक की तरह रेफर करूंगा तो मैं यू नो आई एम ट्रीटिंग माय प्रोडक्ट बेटर, सो हेंस आई वांटेड टू स्टिक विद द वर्ड बाइक. And my bike, because the first question when I narrated this idea to my father, and मेरे father मेरे सबसे बड़े supporter हैं और सबसे बड़े critic हैं. So उनका first दो उनके observations थे. एक था कि तेरे business का सबसे बड़ा weak point है कि तू government के साथ काम कर रहा है. And उसका आंसर मैं आज नहीं दे पाऊंगा. But second second उनका feedback था कि इंडिया में public property की कदर नहीं होती है. राइट? तो आई वाज लाइक कि मुझे एक ऐसा नाम देना है कि जब आदमी उसका जिक्र करे तो उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो. तो हाउ डिड यू कम हियर टुडे? आई केम ऑन माय बाइक, राइट? सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड दैट वी विल कॉल इट माय बाइक, like it's as if it's your personal bicycle, right? So that was the thought behind the brand name. And in terms of software, yes, software was very important. प्रोडक्ट में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है. जब हमने माई बाइक स्टार्ट किया, हार्डवेयर हमारे पास नहीं था और हार्डवेयर चाइना जाके सोर्स करने का दिमाग भी नहीं था. सो हमने एक बार के लिए सॉफ्टवेयर बना के मैनुअल ह्यूमन बेस्ड इंटरफेस के साथ स्टार्ट किया था माई बाइक. आई स्टिल रिमेम्बर शिवरन्नी पे हमने ब्रिज के नीचे हमारा जो स्टैंड बनाया था ग्रीन कलर का, उसमें एक लड़का लैपटॉप लेके एक यूएसबी से कनेक्टेड वायर्ड डोंगल के साथ ट्रांजेक्शंस कैप्चर करता था कि कौन सी साइकिल आ रही है, कौन सी जा रही है. हम स्कैन करते थे वो आरएफआईडी से. उसके बाद पैरेलली जो कैश फ्लो जनरेट हुआ सिस्टम में, तो हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने लग गए और हमने हमारा एक लॉक का प्रोटोटाइप बनाया. लेकिन देन आई फाइनली वेंट टू चाइना फॉर अ बाइक एक्सपो एंड आई सॉ दैट वो हार्डवेयर ऑलरेडी कमोडिटी की तरह बिक रहा था फॉर अ फार बेटर क्वालिटी एंड फार बेटर प्राइस. सो आई सोर्स दैट हार्डवेयर एंड वी स्टार्टेड विद दैट. सो सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहा. स्टार्टिंग में हमारे पास मोबाइल ऐप नहीं था, बाद में हमने मोबाइल ऐप बनाया. फिर मोबाइल ऐप के बाद जब ये हार्डवेयर आ गया और ऑटोमेटेड हो गया पूरा सिस्टम, तो मोबाइल ऐप एक नया वर्जन लॉन्च किया. सो सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहा है. अगेन वी डोंट हैव एन इन हाउस टेक टीम, सो वी ओनली इन्वेस्ट आवर एनर्जीज जहां हमें पता है कि आउटसोर्सिंग एज एन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लाइक दैट स्टैंड. बट जहां हमें लगता है कि आउटसोर्सिंग एज एन ऑप्शन अवेलेबल है, वी रिलाई ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ आवर वेंडर पार्टनर्स. और हमारे सारे कोर वेंडर्स जो हैं 10 साल से हमारे साथ हैं, डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो इवन द आईओटी लॉक, while we would have developed it, but we worked with a vendor rather than कि हम हमारी टीम बिल्ड करें, because that's a very inefficient way of building, because वो one time project है. उसके लिए आपको एक टीम कॉस्ट को फंड करने की जरूरत नहीं है. So I don't know if I answer your question properly, but yeah, software has been a constant development and software is the heart of what my bike is. But at the same time, operations and supply chain management is equally important. Yeah. Yes. Yes, Nilesh bhai. Yeah. Okay, so here's a very interesting part. I don't know if I should say this, especially since this is getting broadcast. Starting में जो हमने माई बाइक डाली थी, तो उसमें जीपीआरएस लॉक्स थे, राइट? इवेंचुअली हमने इस तरह से बिजनेस को बनाया कि यूजर में एक डिसिप्लिन आ गया कि यूजर स्टैंड पे ही साइकिल रखता है और स्टैंड से उठाता है. सो जब हमको एक्सपांड करना था और 5000 साइकिल्स का एक साथ ऑर्डर देना था, तब पोस्ट कोविड प्राइसेस बहुत एस्केलेट हो गए थे. तो अगेन जो हमने बजटिंग किया था उससे बाहर जा रहा था हमारा केपेक्स. तो वेंडर के पास एक ऑप्शन था वेर इन द लॉक वाज ब्लूटूथ ओनली, एंड बहुत बड़ा डिसीजन था. इवेंचुअली नो वन इन द कंपनी प्रोबेबली एग्रीड कि रिस्क लेना चाहिए, बट आई टुक दैट रिस्क क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे धंधा करना है यार. तो हमने ब्लूटूथ ओनली लॉक्स लिया. उससे हमने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. एक, जीपीआरएस लॉक्स को पावर कंजम्पशन ज्यादा है तो सोलर पैनल भी लगती थी. दूसरा, सोलर पैनल बास्केट में से चोरी हो जाती थी या कभी तार कट जाता था तो लॉक चार्ज होना बंद हो जाता था. कस्टमर का एक्सपीरियंस भी खराब हो रहा था. ब्लूटूथ में वो सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो गई बिकॉज वो 1 साल बैटरी चलती है. सो टुडे
We don't have cycles with GPS. So, you know, the point that I want to make here is a lot of us do the mistake कि हम टेक्नोलॉजी से इतने एक्साइट हो जाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को जबरदस्ती घुसाते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन में. That's not the way. You have to think about the user and what is the experience you want to give. And if that requires technology, which it will, then that is where you invest in technology. कि यूजर को एक्सपीरियंस क्या देना है, वहां से वर्क बैक करके आपको डिसाइड करना है कि हाउ मच टेक्नोलॉजी इज नीडेड, right? Where its intervention is needed, where it can enhance the user experience or reduce cost of operations or help you in your scalability. Thank you. Yeah. Yes, sir. So my straight away the question is that after applying your idea on the ground, so what are the failures which you have faced and how you solve them? यार इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 years. फेलियर्स का काउंट करते करते थोड़ा मेमोरी जो है वो ब्लर हो गई है. आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस एट माई बाइक हैज बीन, सी वी हैव सर्वाइव्ड. जहां बड़े बड़े प्लेयर्स फेल हो गए, आप गूगल करेंगे बाइक शेयर ग्रेवयार्ड और आपको ढगला दिखेगा साइकिल्स का जो ग्रेवयार्ड में है. वी हैव सर्वाइव्ड बिकॉज हमको कभी फंडिंग नहीं मिली इतनी इजीली. वो फर्स्ट इन्वेस्टर जो मेरे को पहले दिन मिल गया ना, उस दिन मेरा लक खत्म हो गया. उसके बाद से 10 साल से स्ट्रगल ही रहा है, राइट? सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस इज गेटिंग इन्वेस्टर्स टू बिलीव इन अस, बिकॉज आज भी 10 साल बाद भी इतना कुछ प्रूव करने के बाद भी फंडामेंटल क्वेश्चन हमें आज भी पूछा जाता है कि इंडिया में साइकिल कौन चलाएगा. द फैक्ट इज टुडे वी हैव 10,000 साइकिल्स अक्रॉस 6 cities, राइट? रिलायंस जामनगर रिफाइनरी में हमारी 1500 साइकिल्स हैं, अदानी शांतिग्राम में 200 साइकिल्स हैं, अहमदाबाद में 2500 साइकिल, सिटी में 500 साइकिल्स रिवर फ्रंट पे हैं. सो इतना सब करने के बाद भी जब इन्वेस्टर्स ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं तो ये काफी डिसहार्टनिंग लगता है, टू बी ऑनेस्ट. सो दैट हैज बीन टू, एंड इसका रीजन ये कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने आके इतनी गंद मचाई और वो इतने मिजरेबली फेल हुए कि टुडे वी आर मेड आंसरेबल फॉर देयर फेलियर्स. सो इन्वेस्टर्स गलत नहीं है, बिकॉज उन्होंने तो मार्केट में जो देखा उसके बेसिस पे उनका परसेप्शन है, राइट? So it's a hard job for us that we have to prove that why the others failed and why we are succeeding. So that has been the toughest for me. Yeah. Okay. So you mentioned that you ran into some issues during the innovation process while you were developing the systems. So then how would you exactly define this innovation process? What are the general steps and how would you solve problems in that? To be honest, I would not be able to articulate it in step by step. वो कहते हैं ना कि तैरना नहीं आता, बस कूद जाओ और हाथ पांव मारो और तैरना सीख जाओगे. It's I mean, to quote Iron Man, sometimes you need to run before you can learn how to walk, right? So बस कूद जाओ और एंटरप्रेन्योरशिप सब सिखा देती है यार. और फिर पीछे से प्रोफेशनल्स आ जाते हैं जो आपके मेथड टू मैडनेस को सिस्टमेटिक करके आपको स्केलेबिलिटी के लिए तैयार करते हैं. सो यू गेट एक्सटर्नल हेल्प इवेंचुअली. या, थैंक यू गाइस. Thank you, Arijit sir. Now I request Associate Director SAC Shri Dinesh Kumar Singh sir to present a memento to Shri Arijit Soni. नाउ क्या करें, एक सरप्राइज है सबके लिए. एक क्विज खेलें क्या? रेडी स्टूडेंट्स? बहुत लो साउंड है. रेडी फॉर क्विज और नॉट? Okay. Then I would invite Prateek to throw some questions to you. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जैन, आपका ज्ञान विज्ञान मित्र, आपसे कुछ रोचक प्रश्न पूछने आया हूं. तो ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको ज्ञान विज्ञान और तकनीकी में
कुछ और आगे रुचि बढ़ाने के लिए और गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करेंगे। तो कुछ इस क्विज के बेसिक रूल्स बता देता हूं। आपके सामने एक प्रश्न रखा जाएगा, उस प्रश्न के ऑप्शंस नहीं खुले होंगे। अगर आप बिना ऑप्शंस देखे आंसर देते हैं तो आपको डबल प्राइस मिलेगा, लेकिन अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो हम 4 ऑप्शंस खोलेंगे और ऑप्शंस पे अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको सिंगल प्राइस मिलेगा। पर हर प्रश्न के लिए सिर्फ 2 ही प्रयास अलाउ किए जाएंगे, उसके बाद हम आपको सही आंसर दे देंगे। तो क्या शुरू करें? ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उस भारतीय ऑपरेशन का नाम बताएं जिसमें एक एंटी उपग्रह अस्त्र का परीक्षण किया गया था, जिसने अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को ऐसा करने वाला चौथा देश बना दिया था। नेम द इंडियन ऑपरेशन where an anti-satellite weapon was tested that made India the 4th country to do that after US, Russia and China. बिना ऑप्शन देखे कोई उत्तर बता पाएगा? नो, गलत आंसर। अब ऑप्शन खोल दिए जाए। नहीं, एक ही उत्तर लेंगे, अगर एक गलत हुआ तो फिर ऑप्शन खोल देंगे। अच्छा नहीं, ऐसे मत बोलिए, एक करके बोले, किसी को, इतने सारे लोगों को मैं पुरस्कार नहीं दे पाऊंगा। तो क्योंकि इस सेक्शन से हमने पूछ लिया, इस सेक्शन में अगर कोई बताना चाहे तो हाँ, आप बताइए। मिशन शक्ति बिल्कुल सही उत्तर है। ए, मिशन शक्ति को लॉक किया जाए। कृपया इनको प्राइज दिया जाए। ये डीआरडीओ द्वारा किया गया मिशन था जो एंटी सैटेलाइट वेपन था। इसको करके माइक्रोसेट आर सैटेलाइट जो लियो में था 283 किलोमीटर ऑर्बिट पे, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर आपको पता चल गया है तो ये नहीं दिखाएंगे। चलिए, आज राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है, तो आप क्या बता सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो उनको बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शंस खोले जाए और उसको। अच्छा, आप बता सकते हैं कि क्यों मनाया जाता है? नहीं, सीवी रामन जी सही है, लेकिन बर्थडे नहीं है उनका। उस दिन उन्होंने जो है रामन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए उस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, जो 1987 से ये दिवस मनाया जाता है। थैंक यू। Now, I would like to introduce our next speaker, Ms. Astha Jhala. She is a space architect and analog astronaut, renowned for founding India's first space architectural studio. She has many degrees in space system architecture and design from foreign universities. She is recognized as India's youngest icon in space architecture. She has been honored with the Global Icon Award and the She Rise Award by CII. Please welcome Ms. Astha Jhala. So I was prepared to say good morning, but now it's afternoon. So I wish a very good afternoon to one and all present over here. And before I start, I want to share one experience. 2 months back, I was at VSS. I was visiting this Vikram Sarabhai Space Exhibition Center. And in that exhibition center, there is a small planetarium, like there is a small auditorium, I think, and for a gathering of like 100 people. So I just randomly stood there and I just told my colleague that why don't you take a picture? One day I'll be also speaking at ISRO for space architecture. And this is happening just after 2 months I visualized it. So I think one of the greatest lessons I have learned in my life is to visualize what you want to become. And when you visualize, you must visualize the best and highest of yourself. So it is an honor to be talking about space architecture here. And for this wonderful opportunity, I would like to thank Dr. Jolly and also Nilesh sir and the whole team of SAC for inviting me here.
So how this all career started? When I was just 14 years old, I went to this NASA Space Academy at Huntsville, Alabama Center from my school. And only two students were selected from all across Gujarat during that time. And during this academy, we were basically trained like mock astronauts. So some of the activities we did was wearing the space suits, dawn off, 1/6 gravity chair, multi-exercise trainer, and performing lunar simulations, extravehicular activities, and some underwater EVA activity. So the first picture is from there. But one of the most interesting tasks was to design something on the moon base. And I designed a fuel station thinking that we might run out of the fuel while coming back to the Earth. And I got an award for it, NASA Lunar Design Contract Award. So just like any other child, I got super excited. So I called my parents and I said, I am getting an award, NASA Lunar Design Contract and Award for designing a fuel station on the moon. So I want to become a designer for the moon. And my parents said that instead of becoming a designer, why don't you become an architect? So it is also like a technical background to designing. So I said, maybe I'll become a space architect because I want to differentiate myself from other architects. And it was that time when I was just 13 years old, I decided that one day I want to become a space architect. But at that time, there was nothing like space architecture. People used to laugh about it when I used to say, in school, we are asked what you want to become when you grow older. And I used to say, I want to become a space architect. So, but it's again, I think the visualization works because for many years, I dreamed of becoming a space architect. And after my school, when I went to study architecture abroad, I did my architecture from UK and then I got a European Union scholarship and I moved to Denmark. I did a dual degree program, architecture and engineering. And followed by that, I did space system architecture. So during at that time, it was when the space architecture was basically evolving. Space architecture is still a discipline emerging subject right now. And again, after my studies, I was looking for a job in space architecture. And that time only NASA was hiring space architects. So I did not had a job opportunity because I was not a US citizen. So I studied my whole, but I'm somebody who will never give up. So it's like when you take the first step, you must walk towards the end of your journey. Otherwise, don't even start. So I'm very much motivated with this thing. So I started my research on my own. And I did a research on designing the 3D printed Mars habitat. And my first project was called Mangala. I presented Mangala at ICES conference, International Conference on Environmental Space Systems. And during that conference, my project was judged by astronaut Daniel Burbank, who is here. And he encouraged me that, you should go for this career because it's something which is coming up in the future. Again, I did a research, I published my technical paper, but then where is the job opportunity? So I used to work full time as an architect. Plus, I founded a Arca Space Studio, which was India's and Canada's first space architectural studio. So my third biggest learning of my life is when there are no opportunities, you must create them. And that is how it all started. And I also ended up giving 3 TED Talks on space architecture following by that. So how did all space architecture came? Like what exactly is space architecture? How did this evolved? I think many of you might have heard of International Space Station. So here is a picture of International Space Station. And so what kind of functions goes in International Space Station? We have crew quarters, we have a galley, a waste hygiene compartment, biolab, hydroponic systems. So designing of all of these habitat functions and making sure it aligns with the ergonomics and anthropometry is a subject of space architecture. Yes. Next. So these are the few conceptual designs across the world in space architecture. Now, many times when I moved back to India, I just moved back to India 2 years back because of the biological clock. I had to get married. So everybody asking, when are you going to send it to space? This is not going to happen. There is nobody working on it. It's a very far illusioned dream. But let me tell you, NASA has already hired a company called Icon and Big to design the first 3D printed lunar habitat.
And with the success of the Chandrayaan-3 mission and the future ISRO's plans to also land astronauts on the lunar surface, we need to have a space architecture discipline. And this is a part of it. So you can see here are some of the conceptual designs of 3D printed Mars habitat, 3D printed lunar habitat. And the last four projects are designed by my studio. One is the underwater habitat, which is also part of space architecture. And then we have a deployable structure origami space architectural habitat. Now, so when I moved back to India, I was very much curious about ISRO's mission, Gaganyaan mission. And this is the only way I could expand my career in space architecture in India. So I was like, why don't I introduce this subject to you at ISRO? So we started looking into the Gaganyaan crew module. And initially, and we cannot find a lot of information on the internet about it, about the program. So I came across a picture with the 3D astronauts. So I was like, okay, I think I listed out some basic Gaganyaan crew module requirements that we need a crew model of 3 people, 3 crew astronauts. And this is the dimension which is given. But because I was a space architect and I had a background in anthropometry and ergonomics, it was very much clear that we cannot really accommodate 3 crew seats. We can only accommodate up to 2 crew seats according to the design and the measurements which are suggested. So this is how we start designing. By understanding the mission requirements is the first role in space architecture. Now, my motivation was, I think most of you have seen this SpaceX Inspiration 4 crew module. You have seen Blue Origin crew module. You have seen Virgin Galactic's crew module. So when I was looking at pictures for Gaganyaan crew module pictures, like how it will look, what is it's going to be like, I couldn't really find many inspirations. So I was like, it is okay to enter this launch now, but we can still give a very competitive design and inspire the young generation in terms of space architectural design and the interior of the Gaganyaan crew module. My motivation was it should thrill everyone that when they see, oh, this is how our Gaganauts are going to space. So this is what we have proposed on the purple, on the completely right side. And this is the actual interior of SpaceX and Virgin Galactic and Blue Origin's spaceships. So when we are designing for space architecture, a lot of things play into the role. For example, when we are designing for space, everything we have to calculate is in volume and mass and not in feet and inches. And zero gravity position, how our body will react in anti-gravity is all very crucial in the subject of space architecture. I'll just quickly take through it. So let's say, for example, when I'm designing the Gaganyaan crew model, what all as a space architect I'll be cultivating. So one will be like understanding what kind of systems are we sending to space, what kind of life support systems are going to come, and then understanding how much space do we have for the crew seat assembly. So designing the crew seat assembly, the impact actuator system, all of this, the materials for it, we have to also make sure that the crew seats are very lightweight. This all plays a very crucial role in the complete interior designing of the Gaganyaan. And one of the greatest features that we have added to this design was circadian lighting system, basically mimicking the daylight system from the Earth in the space. So it will enhance the psychological factors, and it will also improvise the mental health of the crew when they're in the space, so they don't feel homesick and they're able to perform better. Because when an astronauts fail in space, that's when the complete mission goes failure. This is another drawings. So when we are talking about space architecture, it's not just good looking design. We don't want to design something which we cannot construct it. So building the prototype out of that is very crucial. So we want to make sure whatever we're designing is buildable, it's affordable, and can be actually used in space. So this is this kind of technical drawings we do in detail when we are working on projects like this. Next. There's another specification for the technical drawing. So we presented this project at HSFC Center in Bangalore 2 months back. And so here is a circadian lighting system in the purple. And then you can see how detailed the drawings are. So we have to also see the stresses the astronauts will face when they're being launched to space. And also when they will land back, what kind of stresses they will be going through. This is another nice looking 3D render of the Gaganyaan crew module interior. Now, you might have also heard about Bharatiya Antariksh Station today in the morning. And this is another visualization of the Bharatiya Antariksh Station. So I think that as a space architect, everything first starts with a very
visualization, then concept designing, then schematic designing. And after schematic designing, we start working on understanding the mission requirements, understanding the budget for it, and then the duration of the project, how long it is going to be in the space. And as per that, we start looking into the more depth of the habitat functions. So when we are talking about orbit inflight, it was a proposed conceptual design for the as a extension or as an alternative to Bharat Antariksh Station. It's an inflatable habitat. So we have a crew model over here and a service model, and we have inflatable structures. Companies like Sierra Space, Blue Origin, Lockheed Martin, they have all been working for inflatable structures for a very long time. And I must tell all of you that in the coming years, India will also be requiring inflatable structures for space. So this is something which is very much coming up. Because so one is like why we want to use inflatable structures is because inflatable structures has a very great increase in the mass volume ratio. They are lightweight, they are cost effective, and all of these factors plays a very crucial role because we have a very restriction on the payload fairing. We can only send certain amount of dimension to space. So this is very crucial. Some of the other structures that also go into the space is prefab structures, in-space manufacturing, and then inflatable structures, 3D printing on the lunar surface, on the Martian surface. This is all something which is coming up. This is all coming in the technological development. I forgot to wish a very happy National Technology Day to everyone here. Next. So in this, we are basically, this is not a very, we are not presenting today a very detailed concept, but it is something what will be coming in the future in terms of space architecture. So let's say, for example, in our system, we also have this, it has a multi-purpose. It can be used for space tourism, in-orbit laboratory, debris collection, in-space manufacturing, advanced self-assembling structure, and much more. It is very important to identify the multi-user requirements when we're designing for the space. So it can help us to generate revenue. One of the biggest challenges as a startup of a space architecture company I face is the revenue generation. And this is in every space startups that all of us face. So all of you who are looking forward to start a space startup in the coming future, I must tell this is going to be one of the biggest challenge. But now with the efforts of InSpace and ISRO, it is becoming more easier to acquire funding, FDIs, and also from India to put up. And now so many companies are coming in the private space sector. For example, we have Skyroot Aerospace, we have Digantara, we have Dhruva Space. So many space companies are now coming up in India. So how does the technological advancement play a role in space architecture? One is the 3D printing ISRU lunar regolith. One of the second technical paper was on Mars surface deployment systems. What kind of systems we'll be carrying to Mars when we are deploying it for the first time? And one of the crucial thing that we considered was putting up a 3D printer on the Mars base. And this is a very similar to also lunar surface. Because when we are considering for a deep space long-term missions, 3D printing is very much essential for because it's very expensive to keep on sending prefab structures from here to the space. Second is the automation AI control habitable volume. One of the current research that we are doing at Dhaka Space Studio is how can we automate the life support systems? Now, when I say about life support systems, we can talk about air revitalization system, water recycling systems, oxygen control, temperature, humidity control, how all of this can be controlled with the use of the most advanced technology. And it can detect the faults and it can also correct the errors in case of an emergency. So this is one of the things that we are developing at Dhaka Space Studio right now. Another thing is also hydroponics and aeroponics. This is a very important thing coming up for space habitat, because for a long-term deep space mission, we need to understand how we can produce food in the space. Spirulina is very much used in space currently. Then we also have life support and control systems. So there is a constant technological development. I must tell you that. So many times people ask me this question: why are you working for a space sector? Like this is something which is very futuristic, but when we are designing for a space, that's when we are able to have a lot of technological development. For example, the first recycling system was designed for the space. And that is how we got to have recycling systems for the Earth. So, and then we have a deployment mechanism. Here, mechanical engineering also plays a very crucial role, mechanical and electrical engineering, because how to have an automated deployment in space is something very much crucial. So all of these things is going to come in the future. It is already
the challenges are already there in currently. And this is something very interesting because as a space architect, I cannot really go to the space and design something and think, because as an when we are an architect, we can just go to a site and understand what kind of user requirements are there. But how do we do that for space? So we have this India's first lunar analog expeditions. I also have analog astronautics background. So where we say, what is analog astronautics? It's basically you stay in a simulated environment for a period of 20 to 25 days, a minimum, and then you experience a life of an astronaut. So basically you mimic the astronaut experiences. For example, performing EVAs, soil testing study, psychological study, health monitoring system, all of these things. And ACA has launched India's first lunar expeditions in Dholavira, Kutch, where we give an experience of space analogs. So over there, basically all the students, it is open for any age groups from about 16. And we make the students wear astronaut suits. They learn about the space suit, technological development, and then also hydroponic systems for space. We have 3 habitats being set up in analog environment, and with a very limited amount of resources, where we study the crew psychology, where we also have last year we had a rover challenge over there. And then also we can see we have a 3D printing in our expeditions. So this is also a very interesting thing that we're trying to develop for the students who wants to have a space career in the future, but don't know where to start, because this expedition helps them to understand different kinds of technologies which are going to come in the coming future. So next. I think that is all I have to say. I kept it a little bit short, and I'll welcome any questions if you have. Good afternoon, ma'am. A very good afternoon. Ma'am, actually, my question is, as you mentioned before, that the field you work, it was not recognized before. So you have like darkness before your. So what kept you going that working is not recognized by people and all? Still, you kept working on it. So what motivated you? Yes. So I'm somebody, if you start, you must go all the way. So, and it is always about creating the opportunity. There's always somebody who did something for the first time. For example, the invention of the light bulb, invention of the rocket system, invention of a habit. There are so many inventions which are done by somebody for the first time. So it is, and this is, you can easily see, because NASA, so my also one of the motivation was that NASA landed astronauts on moon many years back. We already have 11 lunar missions still, and we still have an Artemis mission coming up. So India is also going to be on that path for sure. So even right now, I do not really have too many opportunities, but I'm pretty much sure that now with the rise of the private sector, and there are now so many private companies who are also doing crew service modules, who are into launch vehicles. So this is something which is definitely coming up, and I always had a vision in my mind. So when I feel demotivated that something is not actually happening in the real scale, I just close my eyes and visualize what is going to happen in the next 10 years for myself. And when I open my eyes, I start working on it. So that is how it has been. And one more question. One specific project, how much time it takes to design the project? It takes a minimum of 2 years. Yes. So we put up a lot of effort because it's not really easy. Now, let's say, for example, when I'm designing this Gaganyaan crew module, right? We don't have we don't have the data. So basically, when we are working for a space sector, many times we are working on the data which we don't have it. We have to stimulate it, and we can stimulate it through a lot of prototyping and putting ourselves into the same scenario. That is why we have these expeditions. So I have done my first expedition was for 22 days in complete isolation, and that is where I simulated myself and imagined myself if I was going to be on a moon one day, what kind of facilities I will require, what kind of resources I will require, how much is going to be the electric consumption, how much is going to be the food consumption, what will I do in case of an emergencies. So we basically stimulate a lot of scenarios and then we work on it. Okay,
So I think we don't have any more questions. I think we can see one more. We'll have one more. and Sorry, then we are running short of short of time, So, so madam won't be will be able to available in the take more basement during questions. lunch time, so you can interact with madam. That's not a problem. Yeah, please. थैंक यू मैम। अब मैं जॉली मैम से अनुरोध करता हूं कि वे मिस आस्था झाला मैम को स्मृति चिन्ह भेंट करें। Thank you, ma'am. A successful entrepreneur know that best way to predict the future is to create it. Today we have with us someone who has changed the way we enjoy, eat and cherish the snacks. Shri Chandubai Virani, founder and managing director, Balaji Wafers Private Limited, India. A highly goal-oriented person, a devotee of Lord Balaji, and gem of person, Sri Chandubai Virani, is a full of positive attitude, yet very down-to-earth by nature. You all will be surprised to know that in year 2020, National Geographic Channel took Balaji Wafers' story in their prestigious program, Super Factories. Please welcome Sri Chandubai Virani. लंच का टाइम हो गया है, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं टाइम को रिस्पेक्ट देने वाला हूं। टाइम मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कहीं समय चला जाता पता नहीं चलता। तो गुड आफ्टरनून एंड जय बालाजी। इसरो ने आपसे कनेक्ट करने के लिए मेरे को बुलाया, धन्यवाद। तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं बालाजी की हिस्ट्री संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। तो बालाजी वेफर्स की हिस्ट्री हर मुसीबत से हमारी आगे बढ़ी है, सफलता। मैं जामनगर जिला का कालावड़ तालुका का मेरा एक गांव, छोटा सा धुंधोराजी गांव, वहां का वतनी। 1973 तक हमारे यहाँ पावर नहीं था, पहाड़ों में गांव हमारा, उसी गांव में मैं पला। और वहां आज सब तुमको तकलीफ है, इतनी उसी टाइम हमको तकलीफ नहीं थी, क्योंकि हमको कुछ अपेक्षा नहीं थी। हमको 5 पैसे लेता था मैं, 10 पैसा लेता था, 5 पैसा का गोला खा के 5 पैसा वापस रख देता था। पैसा ज्यादा है तो कुछ मिलता नहीं था, अगर मिलता है तो पैसा नहीं था, दोनों बातें थी। और हमको जरूरत भी नहीं थी। हम गुजराती में कहेवाय ने भैणा नहीं पण गैणा खरा। गामड़ा में, गांव में हमको क्या पता नहीं था। हम स्कूल जाते थे, स्कूल छोड़ के हम नदियों में चले जाते थे, उससे नदी में कूदते थे। एक बार एक आदमी कूद के कीचड़ में फंस गया, दूसरा बचाने गया, वो भी मर गया, दोनों मर गए। तब हमारे पिताजी ने या मेरे मदर ने ऐसा नहीं बोला कि वहां मत जाना, क्योंकि हमको सारी चीजें खुद करनी थी, ये मानसिकता थी। तो कई लोगों ने पूछा आप कितने थे? मैंने कहा हम 4 भाई थे, 2 मेरी सिस्टर थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब एक एक ही है, ऐसा नहीं कर छोड़ सकते, क्योंकि हमको छोड़ देते थे तो हम खुद जिम्मेदार बनते थे। और गांव में क्या होता था, गेहूं की चिंता है, 1 साल का गेहूं है तो हम सुखी हैं, और 2 साल का गेहूं है तो अमीर है। लेकिन वो भी नहीं हुआ, अकाल पड़ा तो वो भी नहीं हुआ। थोड़ा कुछ बोया वो चला गया, फिर थोड़ी बारिश हुई, वो बोया वो भी चला गया। और उसी टाइम हर 3-4 साल में हमारे एरिया में अकाल पड़ता था। और राजकोट में
20 साल पहले पीने के लिए पानी ट्रेन से आता था। तो पानी नहीं है तो गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है तो वो चिंता नहीं, चिंतन है। तो चिंतन करके 1974 में मैं और मेरा बड़े भाई राजकोट आए। पहला गोल था यहाँ सेट होना है, कमाना है, ये नहीं, सेट होना है, वापस नहीं जाना है। इसमें उसी टाइम पे एक एस्टोन सिनेमा का उद्घाटन हुआ और उसमें मेरे और बड़े भाई को कैंटीन में नौकरी मिली। मेरे को 90 रुपया, बड़े भाई को 150 रुपया, और कैंटीन में सारी चीजें बेचते थे। इसमें ये चिप्स और नमकीन हमको रेगुलर नहीं मिलता था, 1 2 3 ऐसे सप्लायर चेंज किया और अच्छा काम किया था। कोई भी सिनेमा का काम है तो 24 घंटे हम काम करते थे, अच्छा काम किया, कर्म का फल मिला हमको। ये कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी तो वो हमारी हो गई, तो हम तो ज्यादा मेहनत करेंगे, पहले भी करते थे और फिर ज्यादा करेंगे। तो वो जो नहीं मिलता था स्नैक्स और नमकीन, वो 7 साल परेशान होने के बाद हमने गांव की सारी पूंजी बेच के एक राजकोट में मकान बना लिया और वहां हमने, ये रेगुलर नहीं मिलता था इसलिए हमने चिप्स बनाना शुरू किया। एक आदमी रखा, वो ऐसा आया कि 15 दिन आए, 15 दिन नहीं आता था। तो वो एक मुसीबत। तो मैं खुद रात को, दिन को सिनेमा में जाता था, रात को आके वो चिप्स बनाता था, कहीं बिगाड़ता था, सुधारता था, ऐसे बनाने लगा। और बनाते बनाते कैंटीन में बेचते बेचते मेरे को विचार आया कि चलो एक जगह नहीं, अनेक जगह के बेचेंगे। तो बाइक से बेचा, रिक्शा से बेचा, टेम्पो से बेचा। 20,000 की रिक्शा की लोन ली, टेम्पो की 1,80,000 की लोन ली, 3,60,000 की लोन लेके 5,000 की इंडस्ट्रीज एरिया में गए, क्योंकि थोड़ा सेल बढ़ने लगा और लोन लेते गए, आगे बढ़ते गए और लोगों को जोड़ते गए। 20,000 के लोन से करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक लोन ली और लगभग 2,000 करोड़ का हमने इन्वेस्ट किया आज तक। और हमने 12 साल से तो लोन भी नहीं ली है और आगे कभी लोन नहीं लेनी पड़ेगी, इतनी हमारी पास कैपेसिटी है। क्योंकि हमारे पास 5-7 लोग काम करते थे, आज हमारे साथ 6-7 हजार लोग खाली हमारी प्रीमाइसिस में काम कर रहे हैं। और घर से लेके एक फैक्ट्री बाहर 2 इंडस्ट्रीज में की, फिर एक राजकोट में 50 एकड़ में की, एक मुंबई नियर वलसाड़ में की 50 एकड़ में, एक मध्य प्रदेश में इंदौर में 50 एकड़ में की और एक लखनऊ में यूपी में की। ये 4 फैक्ट्री अभी चल रही है। और घर से जब काम कर रहे थे तो 5-7 लोग काम कर रहे थे, आज 6-7 हजार लोग काम कर रहे हैं। 7-8-10 लोग सप्लायर थे, आज 3,000 लोग सप्लायर हैं। 80% सप्लायर हमारे कृषि रिलेटेड ही है, पैकिंग, मशीनरी और बिल्डिंग छोड़ के। और कृषि का हमारे ब्लड में है। मेरे फादर ने भी समझाते थे मेरे को कि बेटे, किसान एक फसल तैयार करता है और उसका रेट दूसरे तय करते हैं। तो वो जो मेरे दादा दादी, मेरे मदर, मेरे नानी, वो संस्कार मैंने लिया। एजुकेशन नहीं था तो प्रैक्टिकल ज्ञान था, संस्कार था, वो लिया मैंने। और जो ये सप्लायर कृषि रिलेटेड है और कृषि का क्या प्रॉब्लम है, मैंने काम किया है कृषि का, मेरे फादर ने किया, मेरे दादा ने किया है, तो वो मेरे को समझ थी। तो मैं किसानों के पास जाता था, किसानों को मीटिंग करता था कि आपको समस्या क्या है। तो वो बोलते हैं आपने 45 mm से छोटे आलू आप नहीं लेते हैं, वो हमको स्टॉक हो जाता है, कभी फेंकना पड़ता है। तो वो आलू का एक हमने आनंद में प्लांट डाला 15 साल पहले, फिर एक प्लांट हमने लुधियाना में, पंजाब में डाला, एक प्लांट हमने इंदौर में, मध्य प्रदेश में डाला। तो ये छोटे आलू की सारी समस्या खत्म और उसका भी इसको पैसा मिलने लगा, तो थोड़ा मजबूत हुए। फिर ये देसी आलू लंबे टाइम तक टिकता नहीं था, तो वो हमने हॉलैंड से लेडी रोजेटा नाम का LR शॉर्ट नाम, वो आलू लाए
और किसान को हमने बोला इतनी अंतर में इसे ऐसे डालो, ड्रिप से पानी डालो, ड्रिप से खाद डालो। एक छोटा बच्चा जैसे कितना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, इसी तरह हमको देखो ऐसे पिलाना है। तो हमने एक किसानों को मजबूत किया। क्यों? कि किसान हमारी कंपनी का मजबूत बेस है। एक मजबूत बेस इसलिए है कि वो अच्छा आज रॉ मटेरियल हमको सप्लाई करता है। एक ही ग्रुप मेरे को 100 करोड़ का आलू देते हैं, इससे छोटा आलू 50 करोड़ का आलू देते हैं, एक इससे छोटा 25 करोड़ का, और पूरे इंडिया में हमको आलू मिलता है। और पर डे मेरे को 10,000 टन 1,000 टन मेरे को पर डे 1,000 टन आलू चाहिए, और पर डे 500 टन अदर प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सारी जो पीनट है, ये सारी दालें हैं, आटा है, वो एक अच्छी रॉ मटेरियल हमको मिलती है और अच्छी मशीनरी में प्रोसेस होता है और अच्छा हम पैकिंग करते हैं। और जो कार्टून चारों फैक्ट्री में तैयार होता है वो 600 ट्रकों द्वारा 8-10 सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लगभग 15-18 राज्यों में डिलीवरी करते हैं। वो किसको डिलीवरी करते हैं कि 2000 डीलर है वहाँ, और जो 2000 डीलर हैं वो छोटे छोटे डीलर हैं, खुद के एक एक एरिया में वो डिलीवरी करते हैं। वो जो छोटा डीलर है वो 5 रिक्शा है, बड़ा डीलर है 100 रिक्शा है, वो एक एक दुकान को डिलीवरी करता है। वो लगभग 40-50 लाख दुकानों में डिलीवरी करता है और वहां से करोड़ों कंज्यूमर परचेस करता है। एक गांव का आदमी, एक अनएजुकेटेड, तो हमने क्या कि एजुकेशन परचेस किया, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाया, तो ये एक बेस बना, एक कुटुंब का बेस बना, और इसके बाद लोगों का बेस बना। इंसान किसको बोलते हैं कि इंसान को एक ऐसा जीव है 84 लाख जीवों में से कि जीव मात्र को ध्यान रखे और मानव मात्र को जोड़े, कनेक्ट करे, काम करता रहे, सीखता रहे और दूसरों को सिखाता रहे। कर्म हिज धर्म है, वो मैंने सुना, वो मैंने माना। मेरे दादाजी बोलते थे कि दूसरे की भलाई में तेरी भलाई है, कर भला तो हो भला। तो मैं उसी टाइम समझता नहीं था कि दादाजी का दिमाग खराब हो गया है, दूसरे की भलाई में मेरी भलाई कैसे होगी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, तो वो जो हमारे संस्कार बोलते हैं, हमारे कर्मों का फल बोलते हैं, हम वो ये बिजनेस में लाएंगे तो काफी फायदा होता है। क्योंकि मैंने तो वही किया, हमारे साथ छोटे से छोटा वर्कर है, छोटे से छोटा सप्लायर है, छोटे से छोटा हमारे साथ सेल करने वाला है, उसको मैंने समस्या का समाधान किया। नहीं कि किसी को मैंने काम का टारगेट दिया, नहीं कि मैंने किसी को स्कीम दिया, नहीं कि मैंने किसी को 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, नहीं कि डेबिट दिया। ऐसा नहीं, आज नहीं दिया, पहले वो डेबिट से मैंने सीखा। परेशानी आई जब मैं बाइक लेके बेचता था तो वो मेरे को फेरिया समझता था। मैं जीवन में कभी मानसिक गरीब नहीं था, मैं आज कभी मानसिक अमीर नहीं हूं। मैं आज भी, इसरो ने बुलाया, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि एक बड़ी संस्था है, वर्ल्ड में हमारा नाम किया है। कहीं भी जाते हैं तो हमको बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। में क्यों? कि आपका लैंड सेफ लैंड हुआ, आपका नाम बहुत आगे आ गया वर्ल्ड में। तो आज इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि आज मैं और बड़ा इंसान बनूंगा। आज काफी लोग मेरे से कनेक्टेड हो गए। तो मैंने हमेशा एक कर्म किया। एक छोटे से छोटा आदमी को आप आएंगे, आप पूछेंगे, आप अहमदाबाद में कोई डीलर को पूछेंगे तो मेरा नाम बोलेंगे, चंदू भाई हमारे सेठ नहीं है, हमारा एक वडील है, हमारा कोई भी समस्या का समाधान करते हैं। जो ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस ऐसा कोई नहीं करते। आज बड़े बड़े मार्क लेके, बड़े बड़े पढ़ के क्या करते हैं, दूसरों को त्रास देते हैं। हम त्रास नहीं देंगे। आज मार्केटिंग में 10-15 लाख पगार देने वाला क्या करेंगे
कि तेरे को इतना सेल करना ही पड़ेगा, और सेल करने वाला क्या बोलेंगे, तेरे को मेरे को गोलियां देनी पड़ेगी, गोलियां तो मेरे फंड देना पड़ेगा, और वहां से नाटक शुरू होता है, और एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट महंगी पड़ती है, और एंड कंज्यूमर खाता नहीं है, और एंड कंज्यूमर और हम आज संगठन एक शक्ति वाला संगठन बनाया, विश्वास वाला संगठन बनाया, विश्वास ट्रस्ट उसको बोलते हैं ब्रांड। ब्रांड એટલે एक बिजनेस એટલે राजकोट में मेरे जन्म से पहले पुराने बिजनेसमैन है, 7 साल से इसे सबसे मैं नंबर 1 टैक्स पेयर हूं। पूरे गुजरात में स्नैक्स नमकीन में नंबर 1 टैक्स पेयर हूं, और पूरे इंडिया में आज वर्ल्ड का नंबर 1 स्नैक्स मार्केट इंडिया में है। ये कुछ भी किए बगैर नंबर 1 ग्रोथ बालाजी चल रहा है, आप देख लेना गूगल में। तो क्या किया मैंने एक इंसान बनने की कोशिश की, एक बड़ा इंसान बनना है, और मैंने आज 6 लाख स्टूडेंट को विजिट करवाया मेरी फैक्ट्री में, कि आप देखिए, आप मेरे हाथ में से ले जाएंगे, नसीब में से नहीं ले जाएंगे, ये कोई सीक्रेट नहीं है। पूरे इंडिया को मैंने जो स्नैक्स नमकीन वाले हैं उसको गाइड किया। ना बड़े बड़ी कंपनी है, लेकिन वो खुद ने नहीं बनाई है, उसने दादाजी ने बनाई है। ये कंपनी मैंने खुद बनाई। मैं आलू खुद परचेस किया, दालें खुद परचेस की, चबा चबा के लिया, आलू का 40 पीस किया, उसको मसाला डाला, पैकेट में डाला, पैकेट से कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर से रिटेलर को बेचा, रिटेलर को डीलर को बेचा, डीलर से आज मैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर बन के बेचा, और आज मैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता हूं। और मैं खुद परचेस करने जाता था, वहां मैंने परचेस मैनेजर बना दिया, प्रोसेस मैनेजर बनाया, क्वालिटी मैनेजर बनाया, R&D बनाया, ऐसे 20 आज डिपार्टमेंट बन गया, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन काम कर रही है। मैं अभी यहाँ हूं तो यहीं जीऊंगा। 2 घंटा लेट हो गया, लेकिन मैंने कभी एक फोन किसी को नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ हूं। मैं घर छोड़ के अहमदाबाद में हूं बस, और मैं फैक्ट्री जाता हूं तो फैक्ट्री में जीता हूं, फैक्ट्री छोड़ूंगा तो घर पे जीता हूं। जहां हूं मैं जीता हूं। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। आप मेरे घर पे आप पूछेंगे, मैं 10 मिनट घर पे खाने पे लेट नहीं पहुंचा। मेरे लिए कोई मिलने आया 5 मिनट मैंने उसको बिठाया नहीं, क्योंकि मैं समय को रिस्पेक्ट देता हूं, समय मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं। आज इतनी बड़ी मेरे पास टीम है, वो खुद काम करती है। हमारे पास 2 टीमें हैं, एक मेरी प्रैक्टिकल टीम, एक मेरे बच्चों की प्रोफेशनल टीम। तो हमारे पास एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट भी है, हमारे पास एक प्रैक्टिकल नमकीन भी है। इसीलिए वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को मिलते थे पहले, MNC कंपनी से मैंने सीखा उससे कि क्या करना चाहिए। उसने नियम बना के, नियम को छोड़ा नहीं, मैंने लोगों को छोड़ा नहीं, नियम को छोड़ा। और एक कंपनी को मैंने ऐसा बनाया कि हमको कोई माल देता है तो हमारे पर माल है ये, तो तुमको राइट नहीं है रेट करने का, तुमको यही रेट है, आपको परचेस करना है या नहीं, आपको पैसा कब देना है वो उसको पूछना है। हमको ये नियम नहीं बनाना है, नियम प्रैक्टिकल है, माल जिसका है वो उसका पैसा है, तो उसको वो बोले तब देना चाहिए। और आप नियम का डिस्कशन कर सकते हैं, दोनों को अच्छा लगे वो नियम बना सकते हैं। इसीलिए आज वो MNC कंपनी ऐसे नहीं कर सकती। इसीलिए वर्ल्ड में एक मैं नो डाउट हमारी लड़ाई हुई MNC कंपनी से, तो हार गए तो हाथ मिलाने आ गए। तो हाथ मिलाने से मैं भी बिका नहीं, समझ गया। आज लोग बिक जाते हैं। आज पूरे इंडिया की नंबर 1 थम्स अप है, वो बिक गई। वो गुजराती था, रमेश चौहान, तो वो नहीं बिकना चाहिए क्योंकि पैसे वाले तो बहुत आएंगे देने, हम हैं,
और खास करके हम तो कौन है, काठियावाड़ी है, हम झुकेंगे नहीं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हाँ झुकेंगे, सामने आदमी छोटे से छोटा आदमी झुकते हैं तो वहां हम रिस्पेक्ट देते हैं। छोटे से छोटा वर्कर को आप पूछिए, मैं कभी ऑफिस में जाऊंगा ना, चाय का नहीं बोलता हूँ, वो भी दे दी है। एक छोटे से छोटा वर्कर मेरे को 2 मिनट चाय लेट से नहीं देता। मैं घर जाऊंगा तो मेरे को कोई लेट से नहीं देंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम होशियार हो जाते हैं। तेरे को नहीं पता, उसको पता नहीं चलता, और जिंदगी भर हमारी पूरी जिम्मेदारी लेके घूमते रहते हैं पागल की तरह। हमको जिम्मेदारी देनी है, अगर देंगे तो लोग मजबूत होंगे। हमारी नेक्स्ट जनरेशन 2 गलतियां करेगी फिर भी हमको नहीं डांटना है, तभी वो मजबूत होंगे। हमारे एम्प्लॉय है, उसको थोड़ा फ्रीडम दीजिए, उसको जिम्मेदारी दीजिए, नहीं कि बार बार उसको मरोड़ते रहिए। तो हमने क्या किया, एक इंसान की फौज खड़ी कर दी। आज लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पूरे इंडिया में जाएंगे, और इंडिया से बाहर भी हम 30-35 देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और वर्ल्ड में हमारी फैक्ट्री देख लेना, गूगल में वर्ल्ड में जो मेगा फैक्ट्री में देख लेना, किसी की फैक्ट्री नहीं होगी। इतना हमने समय के साथ बदलाव भी किया है, टेक्नोलॉजी के साथ हम चले हैं। आज जो टेक्नोलॉजी डे है ना, तो वो हमारे लिए बड़ी बात है कि आज नंबर 1 टेक्नोलॉजी है हमारे पास, रोबोट है। जो रोबोट क्यों आया, कोरोना आया, वर्ल्ड में सबसे बड़ी मुसीबत कोरोना और यूक्रेन की युद्ध आया। कोरोना के टाइम बोलते थे आप एक नजीक आदमी से काम नहीं कर सकते, तो हमने रोबोट लिया। रोबोट, स्पेशल रोबोट आया, इतनी इतनी बड़ी लड़ी का रोबोट कार्टून में भर देते हैं, ये वर्ल्ड में कहाँ कहीं नहीं है। तो मुसीबत से हमने सीखा, मुसीबत से हमने दिमाग में नहीं लगाई, हमने उसमें परेशानी आई तो सीखा, सीख के हम आगे बढ़े। जहां परेशानी आई हमको सफलता मिली, वो भी दिमाग में नहीं ली, क्योंकि सुख दुख निष्फलता सफलता वो जीवन का पाठ है, वो पाठ है तभी जीवन है। जिसके पास सफलता निष्फलता नहीं है तो कभी वो अधूरा है। समझो, सफलता सफलता होती गई और निष्फलता कभी नहीं आएगी तो हम रावण बन जाते हैं। और सबसे बड़ी जो ब्रांड थी वो माल्या के पास थी, तो वो उसको भी भागना पड़ा कि उसके वो दिमाग में आ गया। दिमाग में नहीं लेनी है, स्थिरता में लेनी है। हम इंसान हैं, हमारे भगवान ने 2 आंख 2 पैर दिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा इरादा होना चाहिए। हमको जल्दी नहीं होनी चाहिए, हमको पैशन होना चाहिए। मैंने 49 या तभी मैं मेरा घर छोड़ के सिटी में आया, तब और कुछ नहीं किया है, एक भी पैसा कमाने का नाम नहीं लिया है और काम भी नहीं किया है। मैंने जीवन जिया है, मैंने ये बिजनेस जीवन में उतारा है। मेरे लिए पैसा कमाने का ये धंधा नहीं है। मैंने नारायण नारायण किया और लक्ष्मी अपने आप आई। मैंने 15 फाइनेंस वाला है, आप देख आना कभी, फाइनेंस वालों को बुलाना, पूछना। मैंने कभी प्रॉफिट कितना होगा कभी नहीं देखा। ये प्रॉफिट मैंने गंवाया यूक्रेन का युद्ध और ये कोरोना काल में प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन कोरोना से पहले देख लेना 2500 करोड़ का सेल था, आज 6000 करोड़ का बालाजी का सेल हो गया, और बिना कुछ किए ऑटोमेटिक। तो ये बालाजी की हिस्ट्री 49 ईयर्स की है। लंच का टाइम हो गया, आप क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो बात खत्म करें, नहीं तो मैं तो बोलता रहूंगा। बोलिए, आगे आ जाइए, थोड़ा क्वेश्चन करना है, माइक दे दीजिए। मैं तो यहीं रहूंगा शाम तक, लेकिन इन लोगों को खाना है। तुम्हारे लिए मैं तो बिना खाए बात कर सकता हूँ। તમારી જે જનરેશન હતી એમાં સ્ટાર્ટઅપ કર્યું ત્યારે તમારે એટલા ઇસ્યુ નહીં આવ્યો, પણ અત્યારે તો કોમ્પિટિટર છે, એમાં ઘણા લોકો કેવું કરી રહ્યા છે કે ડર્ટી પોલિટિક્સ બી કરી રહ્યા છે, બિઝનેસ પોલિટિક્સ. તો તમારો શું ઓપિનિયન છે કે આજકાલના જે અમે યુથ છીએ, જો અમે બિઝનેસમાં એન્ટ્રી કરીએ છીએ, તો કેવી વસ્તુ અમારે ન કરવી જોઈએ, જે તમે અમારા જેવા ઉંમરવાળા બિઝનેસમેનમાં જોયેલા છે, કે અમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે અમારે બિઝનેસ ફેમિલી કેવી રીતે ગ્રો કરવી, કસ્ટમરને કેવી રીતે ધ્યાન રાખવા, અને મેઇન છે કે એમ્પ્લોયને કઈ રીતે સાચવવા, હેપી કસ્ટમર રેટ ઇન્ક્રીઝ કઈ રીતે.
કોમ્પિટિશન પહેલા વધારે હતી, આજે ઓછી છે. કોમ્પિટિશન અમે જેટલું માર્કેટ વધતું જશે એટલી કોમ્પિટિશન વધતી જવાની છે. કોમ્પિટિશન જ આપણને શીખવે છે. કોમ્પિટિશનમાં લોકો શું કરે છે, એ હરીફાઈ કરે છે રેટની, પોલિસીની. એ ના કરાય. કોમ્પિટિટરથી આપણે સારું પેકિંગ આપો, કોમ્પિટિટરથી સારી ડિલિવરી આપો, કોમ્પિટિટરથી સારા પ્રોડક્ટ આપો, કોમ્પિટિટરથી સારી મશીનરી વસાવો. સારી મશીનરી વસાવો, 24 કલાક હાલે એવી મશીનરી વસાવો એટલે એ મશીનરી સસ્તી થઈ જશે. એવું કર્યું, દરેક લોકોને સાંભળ્યા. અને મારી જર્ની 49 યર્સની છે. મારે જલ્દી હતી જ નહીં. મારે કઈ કમાવાનું જ નહોતું અને મારે કઈ ગુમાવવાનું નહોતું. મારી પાસે હતું જ નહીં કઈ. તમારે છે ને ઓપ્શન વધારે, તમારી પાસે બુદ્ધિનું સ્તર વધારે, એટલે બુદ્ધિ ભટકાવી દે છે. આમ કરું તો આમ થાય, આમ કરું તો આમ થાય, ऐसा करूंगा तो वैसा होगा ना वैसा करूंगा. अब करेंगे तो भी कुछ तो होगा ने. बैठे रहेंगे तो ना गलती होगी, बैठे रहेंगे उसका काम है तुम्हारी गलती निकालना. और जीवन में सबसे इजी काम क्या है? दूसरों की गलतियां निकालना. गलतियां सुधारना कैसी चाहिए वो कीजिए. तो हमने बहुत गलतियां की है और गलतियों को सुधार के, क्योंकि मैंने 7 साल कंज्यूमर को माल दिया है तो कंज्यूमर की मानसिकता पता है. बाइक लेके रिटेलर को मैंने माल बेचा है. आप मानते? मैंने बोला रिटेलर हमको फेरिया समझते थे, रख दे बिकेगा तो पैसा देंगे. मैं रख देता था. ये माल में डस्ट लग गई है, ये आधा 75% वो खा जाते थे, फिर बोलते ये खराब है. उसमें से सीखा मैंने. ये रिटेल राजा बाजा और बंदर सेम है. वो मेरे कस्टमर नहीं है. ये पांच लोगों ने परेशान किया, ये ले जा वापस, पैसा तूने वैसा तो तेरे को दे दिया, तू भूल गया है. तो मैंने उसमें विचार आया क्या करना चाहिए. तो क्या क्वालिटी बनानी चाहिए. क्वालिटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि तो ऑटोमेटिक डालो. ऑटोमेटिक डाला मेथर एंड प्लेट की कंपनी का. वो प्लांट नहीं चला, खास करके वो कंपनी बंद हो गई, तो वो हमारे जिम्मेदारी पे आ गया. तो हम प्रैक्टिकल वो 6 महीने में वो प्लांट शुरू कर दिया. तो वहां भी हम प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए, प्रैक्टिकल मार्केटिंग बन गए. तो हमारे पास सारी चीजें प्रैक्टिकल भी है और आज हमारे पास सारा डिपार्टमेंट भी है. तो ये सारा काम किया ने गया. कोई काम छोटा नहीं है. हमारे पास 1-2 डिग्री आ गई तो छोटा काम नहीं करेंगे, तो वो अधूरी हो गई डिग्री. प्रैक्टिकल में माहिर होना है. ठीक है, बोलिए. સર અત્યારની જનરેશનમાં મારી જે જનરેશન છે ને એમાં કેવું થાય કે ધીરજનું સ્તર છે ને એકદમ ઘટી ગયું કે કાલે ઉઠીને જ કંઈક કરી લેવું છે. તો એક અમારો આ પ્રશ્ન છે કે તમે 49 વર્ષની જર્ની કરી, તો અમારા જેવા લોકો માટે તમે ધીરજ વિશે શું કહેશો? અને બીજો પ્રશ્ન એ કે આધ્યાત્મિકતા અને બિઝનેસ એ બે વચ્ચેને રિલેટ કઈ રીતે કરશો તમે, કે શું સંબંધ છે આધ્યાત્મિકતા અને ધંધા વચ્ચે? એટલે મારી ત્યાં આવશો ને તમે, જી સર. એટલે આખી 1000 કરોડનું ટર્નઓવર રાજકોટની મેઇન ઓફિસથી થાય છે. ત્યાંથી પરચેસ થાય છે, ત્યાંથી પેમેન્ટ થાય છે. તમે મારી ઓફિસમાં આવશો તો કે તમે કહો કે આ બાલાજીની ઓફિસ નથી, આ તો મેડિટેશનની ઓફિસ છે, એવું શાંતિનું વાતાવરણ લાગશે રિયલી. તો એ થઈ ગયું ને. પેલો પ્રશ્ન શું હતો? ધીરજ. ધીરજ ધીરજ તો આમાં શું છે કે નથી આપણા વડીલોમાં, નથી આપણામાં. આમાં કઈ નેક્સ્ટ જનરેશનનો વાંક નથી અને અમારા જેવાનો વાંક છે કે એનોય વાંક છે ક્યાંક, કે બેટા તને ખબર ના પડે. ઓલો બાપો હોયો જાય ને બેટાને ખબર ના પડે જિંદગીમાં. તો ખબર કોઈને ના પડતી હોય, કામ કરે પ્રેક્ટિકલ તો એ જ ખબર પડે. सिंग चना खा के जिएंगे. हमको ज्यादा फैसिलिटी में चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये मत छोड़ दो. लड़वा दिया है, एक पक्षी जानवर को खाना मिल जाता, हमको नहीं मिलेगा. खाना खाने की कोई चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमको एक इंसान बनना है, कुछ करना है. वो गोल था मेरा. मेरा घर में पहचान होना चाहिए, थोड़ी स्कूल में पहचान होनी चाहिए.
हमारी ये भी पहचान है, हम 4 लोग नहीं जाते थे। कोई पेड़ ऐसा नहीं है मेरे गांव में कि हम ऊपर तक नहीं चढ़े। कोई भी काम में माहिर हो, ऐसा नहीं है कि हमको परसेंटेज ही लेना है। परसेंटेज जीवन है, लेकिन सारा जीवन उसमें नहीं है। काफी लोग परसेंटेज में नहीं है, वो भी नंबर 1 बने हैं वर्ल्ड में। तो वो थोड़ी मानसिकता से बाहर निकलो। हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरी जीवन की गेम मानसिकता है, समझ गए? हमारे पास बहुत शक्ति पड़ी है अंदर, सुसुप्त पड़ी है, उसको जागृत करनी है। और जल्दी नहीं, आहिस्ते 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 हमको जो रस का विषय कहीं मिल जाएगा, तब वो सुसुप्त शक्ति बाहर आ जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखिए और कोई भी काम कीजिए। अब टमाटर का पेड़ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें टमाटर ही आएगा। आम का पेड़ लगाएंगे, वो आम आएगा, बड़ा देर से आएगा। हम क्या करते हैं, टमाटर का पेड़ लगाएंगे और आम की अपेक्षा करेंगे तो मिसगाइड होते हैं। मिसगाइड मत होइए, खुद करिए, खुद कीजिए, सफलता मिलेगी। अगर बाद में कभी भी मेरे को फोन करना, नहीं तेरे को कुछ कर तो सलाह दूंगा, बातें मत कर, ठीक है? तेरा करने लायक तेरी उम्र है। नहीं, आपको जो सुना आपने एक ही एनो जवाब तो मुद्दो क्यों कोई पण હોય માર્કેટિંગ નો 10 થી 15 જણાને શોપ ઉપર મોકલતા ને પૂછાવતા કે બાલાજી વેફર્સ છે એમ. હા, સમજાઈ ગયું. ઓકે, એક જ મિનિટ. હવે આ મુદ્દા ઉપર તમારે શું સમજવાનું? હું ગમે એ કરતો હતો માર્કેટિંગ માટે. આ મુદ્દો રાજકોટ પૂરતો ચાલે, પણ આખા ગુજરાતમાં ના ચાલે, આખા ઇન્ડિયામાં ના ચાલે, આખા વર્લ્ડમાં ના ચાલે. સમજાણું? એટલે આ सीखવાનું આવું नहीं, इसमें से ये सीखने का नहीं है। ये चंदू भाई का खुद आइडिया था, ऐसा हजारों आइडिया था, इसमें से एक ये आइडिया था। लेकिन वो कब तक चला? राजकोट सीमित, स्मॉल था तब ये चलेगा, अभी ये नहीं चलेगा। लेकिन इसमें से आपको ये सीखना है, चंदू भाई ने कुछ भी किया है, हमको भी कुछ करना है। और कुछ है? क्वेश्चन है कोई?